Tier. Gen.G fans, where are you at? Also, shout out to Ulysses, by the way, who's currently hyping out the Gen.G fans and the PRX fans as well. But where do you... Hello. Hello. भाई बताओ क्या अरे चल रहा है? ड्रैक भैया क्या हाल चाल। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया बढ़िया। क्या लगता है ड्रैक भाई आज कौन सा जीतने वाला है? पीआर जीतने वाला है कि जीएनजी? आज सपोर्ट PRX। नहीं तो फाइनल में तो हार गया था ना पीआरएक्स से। पीआरएक्स तो हार गई थी ना। देख भाई, हारने से मतलब नहीं है। तो तुम तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? बोला PRX। PRX हारे जीते फर्क नहीं पड़ना बट चाहिए। जीएनजी भी तो अच्छी टीम है ना, सुनते हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है एक्चुअल में। वो फाइनल तो ऐसे नहीं जीती। क्या हुआ? फाइनल जीती तो लाइक उसकी चली जीती ना। पैसिव की जो किक ऑफ था लाइक वो उसमें जीएनजी तो जीता था ना, सेकंड नंबर पीआरएक्स आया था। यस यस। PRX क्यों पसंद है पता है? उनका स्ट्रैट क्यों? होता है ना, हाँ स्ट्रैट हाँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका स्ट्रैट। हम्म, डब्लो वाला ये हमेशा देखो, इसका स्ट्रैट डब्लो वाला ही रहेगा। हम्म, स्लो नहीं खेलते वो लोग, इसलिए वो लोग कंट्रोल सेंटिनल नहीं खेलते वो लोग, इसलिए हम्म। विदाउट सेंटिनल खेलते हैं वो लोग एक्चुअल में। तब दो इनिशिएटर ऐसा खेलते हैं वो लोग। VCT का ये कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। क्या वॉच पार्टी कर रहे हो? यस। देख लो रे, वो स्ट्राइक नहीं लग जाए। स्ट्राइक क्या हो गया? बोलो, स्ट्राइक नहीं लग नहीं लगेगा, आने लगता है ना, उधर लगता है स्ट्राइक। लस्सी बॉय लस्सी बॉय। अरे बिंग भाई का क्यों लगा रहे हो? वैसे ही वीसीटी लगा लो। आई थिंक कमेंट्री भी करता है ना बंदा, मुझे लगता है उसे भी करना है। इसकी साउंड बहुत कम आती है ना फिर इसमें। मैंने साउंड कम कर दिया है मुझे भी। अच्छा। टेंस क्या था? सेंटिनल जाएगी लाइक फाइनल में, ऐसा लग तो रहा है। यहाँ तो ठंडा हो गया, मिस कर सब रहा बैठ है, करके मिस कर रहा है। स्वेटर पहननी पड़ेगी कल से। क्यों भाई, स्वेटर क्यों? यहाँ तो ठंडा हो रखा है भाई मौसम, अभी भी रजाई में सो रहे हैं हम तो। बारिश हुई है ना, मेरी तरफ भी बारिश हुई है। बहुत ओ बारिश हुई हमारे यहाँ तो ठंडा ही है मौसम देहरादून में। रजाई में अभी तक रजाई नहीं निकली, वो हटी नहीं रजाई, पंखा नहीं चला। समझा समझा समझा। है। बारिश हुई भी बहुत। बारिश होगी तो और ठंडा हो जाएगा, इनर पहननी पड़ जाएगी। इधर भाई, इधर चार चार फैन लगाओ फिर भी गांड फट रहा है इधर। रुक दो भाई। वेलकम स्ट्रीम ब्रो, एसएम ब्रो, वेलकम स्ट्रीम, वेलकम स्ट्रीम। इस VCT का 2 मैच देख के हम जाएंगे रैंक खेलने। सबर अजाने पत्र पड़
अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, सैड। चश्मा कैसे पहना है बंदा? मुझे बताओ, ये जो पीआरएस का डब्ल्यू गेमिंग है, इसको खत्म करनी चाहिए। डब्ल्यू गेमिंग बहुत गंदी चीज होती है, पता है? कई कई डब्ल्यू गेमिंग भारी पड़ जाता है खुद पे भी। इसने बोला डब्ल्यू गेमिंग बहुत गंदी चीज है। पहले से डब्ल्यू गेमिंग नहीं है। बताऊं मैं समझ? आपको, डब्ल्यू गेमिंग पता है हर बस के नहीं है सुन में। हाँ, हर किसी की चीज वो नहीं होता है। हमारे साथ छोड़ो, भाई इवन जो है ना प्रो टीम्स है ना, उनको करना भी मुश्किल है वो चीज। हम्म। भाई तभी वो टॉप पे भी है। अब पता है, ये लोग यहाँ तक कि तीन ड्यूलिस्ट खेलते हैं, ये लोग पता नहीं कैसे। हाँ यार, अरे वो वही वही वो डब्ल्यू वही है गेम ना भाई, देख जब डब्ल्यू गेमिंग करते हो तब 3 ड्यूलिस्ट खेल सकते हैं, जब तुम स्लो खेलते हो 3 ड्यूलिस्ट वेस्ट हो जाएगा। तो वही तो और आजकल बात है। टेक्सचर कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहा है, जेट यस, जेट और जो ड्यूलिस्ट समथिंग। यस सर। जब भाई से वो वो ग्लोबल टेक्सचर, कुछ हो रहा है तब से लाइक अच्छा टीम हो। टेक्सचर कोरियन जेट है ना वो एक्चुअल में। कोरियन वेलोरेंट का कोरिया का फर्स्ट टीम। कोरियन जेट है वो, फर्स्ट अच्छा जो हाँ, प्यार ये बोलते हैं ना वही पीआरएक्स तो तो है। यहाँ का टीम है ना, सिंगापुर की टीम है ना, पीआरएक्स सिंगापुर की टीम है। हाँ, वो जब हुआ था ना, वेलोरेंट स्टार्ट हुआ था ना, तब का प्लेयर है वो टेक्सचर। हम्म। आई थिंक बस मारेगा वो। सेल्डोमन, क्या है वो सेल्डोमन, क्या है वो सियोल्डोम, सियोल्डोम, वो भी तो कोरियन का बहुत बढ़िया जेट है। भाई जी जी में है ना बहुत बढ़िया टीम थी। हम्म। मैक्स के रोसी को ना ड्यूलिस्ट देके बहुत गलती करी उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अगर वो थोड़ा सा चेंजेस करके एक बार खेलते ना नहीं तो शायद। नहीं, ड्यूलिश की बात ही नहीं है, उसको फोकस कराया गया है ऑफ पे सिर्फ, ठीक है। वो गलती है सिर्फ, देख उसको रिलाई ऑन ओनली ऑपिंग, ठीक है, इसलिए वजह से वो फेल हुआ है और कुछ नहीं। ऑपिंग बहुत अच्छा करता है, ये नहीं है कि देख, कितना राउंड है, 30 राउंड में तुम पूरा ऑपिंग थोड़ी ना चलेगा तेरा, ये बता मेरे को, रेफर करना पड़ता है ना। ओपनिंग मैच तभी था जब चेम्बर था, बट चेम्बर के टाइम पे ओपनिंग ठीक थी। नहीं नहीं, अच्छा करता है, नहीं नहीं मैं मना नहीं करता, अच्छा ऑपिंग करता है, लेकिन सिर्फ। उसके शॉट ही नहीं लगे पूरे हाँ वीसीटी में ना, उसके शॉट ही नहीं लगे। भाई तो बोल रहा लोग हूँ, तो सामने शॉट थे ना, वही नहीं लग रहे थे उसके तो। देख वो प्रेशर होगा, ठीक है, उसलिए ना ऐसा हुआ नहीं है। किस्मत भी खराब होगी उस चीज में। पता है इंडियन की पता है क्या चीज है, किस्मत खराब रहती है इंडियन की स्पोर्ट में। ऐसा कोई ग्लोबल पे जाके, ग्लोबल पे जाके मतलब किस्मत खराब ही हो जाती है। किस्मत खराब नहीं रही, देखो उनकी ना जो रहता है ना एनवायरमेंट के लिए एडजस्ट होना आसान नहीं है। देखो उनके साथ खेलना भी है, उसे प्रैक्टिस करना है, उससे इधर को भी एडजस्ट करना है, और जो वीसीटी का जो है ना प्रेशर वो भी झेलना है, और इनका जो होता है ना ऑडियंस, बच्चे ऑडियंस जो गाली देते हैं उसको उसको भी संभालना है, वो आसान नहीं है रे, प्रेशर रहता है बहुत। अच्छा जोजी भाई, हाँ बोलिए ना। ओ जोजी भाई, बोलिए ना। एक चीज बताओ मेरे को, जैसे लेफ्ट जो लेफ्ट सर्वर, डिस्कॉर्ड का सर्वर लेफ्ट करते हैं, वो वाला हम्म। बोर्ड कैसे सेट किया तुमने? पता नहीं क्या हुआ जो। अरे मेरे को भी सेट करना है ना अपने वाले पे। रजिस्ट्री से नहीं किया सर, उससे पूछिएगा ना। अच्छा। कर देंगे। मेरा मेरा भी क्या बोलते हैं, सेम था क्या अरे, हो गया? मेरा भी, मेरा फर्स्ट लाइन था,
हाँ हाँ 2009 या 10 में मुंबई ESL में गया था खेलने, हाँ। लैन पे, फर्स्ट लैन था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, CSGO का क्वालिफायर चल रहा था ESL का। ये। अब मेरा इतना गड़ फट गया था, पता है, पहली बार। मतलब मेरा पूरा बाहर देख, मेरा स्टेट से, मेरा सिटी से बाहर पहली बार गया था ना खेलने। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ, उनका पीसी, जब रूल्स था तुम्हारे पेरिफेरल से खेल नहीं सकते, जो ऑर्गेनाइजर ने दिया ना वही खेलना चाहिए। अच्छा। बाद में उस मैच के बाद मेरा पूरा सेट हो गया वापस, लेकिन मजा आया उसके बाद। और जो अरे खेलने नहीं, चालू। जो लैन में इनको पीसी मिलते हैं, हम्म, तो इनके माउस और वो तो सेफ इनके रहते हैं ना, माउस और वो। हाँ हाँ, कीबोर्ड माउस इनके रहता है, कीबोर्ड माउस और ईयरफोन। हम्म, हम्म, देखना इसके जो ये है ना, ये हेडसेट के नीचे के उनका ही होगा ईयरफोन। ईयरफोन इनको, हाँ। ये रूल्स सारे टूर्नामेंट में नहीं है, थोड़े बहुत ही है। बस जो होते हैं ना स्पॉन्सर्ड, जो होते हैं ना वो लोग, उनको ये देंगे नहीं, हम आपका जो पेरिफेरल्स हम देंगे फ्री में, लेकिन हमारी पेरिफेरल से ही खेलना पड़ेगा करके वो स्पॉन्सर कोई ये किया तो तभी होगा ये चीज़, नहीं तो कोई इशू नहीं है। एक बार है, पहली पहली बार हुआ, फेनेटिक बाहर है वीसीटी से। फेनेटिक क्यों पहली बार कैसे? बाहर हुई होगी वीसीटी से, क्वालिफाई नहीं कर अच्छा पाई। हाँ। अब फेनाटिक के साथ भी एक टीम के है ना, भी कौन सा टीम है अभी, फेनेटिक फेनेटिक मतलब अलावा अभी एक टीम के है ना, अच्छा टीम, कौन सा टीम है? यूरोपियन में गैम्बिट, नहीं गैम्बिट तो हट गई थी फिर इनके बाद। टीएल। टीम लिक्विड एक गया बाहर, वो भी अच्छा टीम है। वो उतने साल से कहाँ चल पा रहा, बढ़िया है। उन्होंने इस बार थोड़ा अच्छा करा था, नेट को लिया, पर तब भी नहीं कर पाया वो अच्छा। भाई केसी और टीएच ने बहुत भयंकर वो करा भाई। केसीटी में ना वो हार गई बस पीआरएक्स से, वरना वही वो स्ट्रॉन्ग चांसेस थे उसके जीतने के। अंडरडॉग टीम बहुत अच्छा वो कर रही है यार, हर साल कोई ना कोई। इस साल जेएनजी आ गई, पिछले साल एनआरजी आई थी, उससे पहले एक बार एसेंड आई थी, एसेंड गैम्बिट आई थी। भाई पता है मेरे को, इस बार जो नया टीम्स है ना वो अच्छा खेलेगा, पता था क्यों? पता है, इस बार जो पुराने टीम्स में बहुत कुछ हुआ है ना, चेंजेस, पर सारे टीम्स हम्म, में हुआ ना चेंजेस, तो ये मेरे को लगा था इस बार जो मेन टीम से भी अच्छा खेलेगा ये लोग, ये सारे टीम्स इस बार जो आए नए। सेंटिनल ने भी काफी बढ़िया करा इस बार। हाँ हाँ भाई, अच्छा था कमबैक। हाँ मैं वो जेएनजी का गॉड तो डैम। भाई एक बात है, पीआरएक्स आया। कंसिस्टेंट टीम है भाई। पीआरएक्स भी मतलब जब भाई से गई है लास्ट बार, वीसीटी में भाई तब इनका से। लास्ट मैच पता है, कोच ने इंटरव्यू में ये बताया कि हमारा टीम गलती से जीत गया। हाँ, कोच ने बताया, उनका पता है, इन लोगों ने थ्रो कर रहे थे बहुत ज्यादा। लास्ट का जो इस मैच के पहले जो खेले ना PRX, थ्रो बहुत क्या गुस्सा था हुआ उनका था? कोच। हाँ, हम्म, भाई क्या हम्म, मारा उसने? अरे शुरू हो गया। चलो चलो, इस बार डुअल डुलिस्ट खेल रहे हैं ना, स्प्लिट में लोग डुअल डुलिस्ट खेल रहे हैं। तुम फुल स्क्रीन कर दो ना इसको। अच्छा हाँ सॉरी। भाई तो ये नोटिस किया का पूरे विसिटी टीम्स में सिर्फ ये अकेला टीम में रेना लेके खेलता है, नोटिस किया ना ये चीज? PRX से जो पिछले। PRX हम्म, में इसमें समथिंग लेके खेलता है सिर्फ, जो PRX टीम ही पिक करता है रेना में। अरे इन्होंने स्टार्ट करा था वैसे, वाइल्ड मैप से। वही वही वाइल्ड मैप से रहना इन्होंने इन्होंने से स्टार्ट करा था। वही बोल रहा हूँ मैं भी। अरे उसे क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, लाइक जैसे कि मार करके पैर में गोली मारना होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या सुना नहीं मैंने, मैंने क्या आपके
बाहर करके पैर में गोली मारना। ये 4 सेकंड रेस के कैसे खेलने लगा भाई रेस? भाई तुम ये जो भाई भी ये आपको पता नहीं क्या, पूरे टीम्स में सबसे बड़ा फ्लेक्सिबल प्लेयर है वो 4 सेकंड। पूरे टीम में, सारे जो टीम है ना उसमें सबसे लेफ्टी बहुत अच्छा बेस्ट खेलता है वो, फ्लेक्सिबल। लेफ्टी अच्छा खेलता है। वाह मेरे लाल। अरे पहले ड्यूलिस्ट और था ना, फिर जीन आया, फिर समथिंग आया, तो इसको ड्यूलिस्ट की रेंज से वो कर दिया था, चेंज कर दिया था शिफ्ट यस, समथिंग आने के बाद। पहले ड्यूलिस्ट ही तो देखो खेलता ना, था ये देख सारा। ये भी नोटिस करो, सारे प्लेयर्स को ड्यूलिस्ट खिला रहे हैं ये लोग, पता है ये चीज। और क्या करना है? सारे प्लेयर को खिला रहे हैं। एक परसों में मोनेट को ये दिला रहे थे ना रेस वगैरह, हम्म, मोनेट को दिलाया, बाद में सैम थी तो वही खेल रहा है। अरे परसों माइंडफ्लिक रोड खेल रहा था। भाई मेरे को लग रहा है पेरेक्स ने है ना सारे पांचों प्लेयर को फ्लेक्सिबल बना रहा है, मेरे को लग रहा है उसे। एक बात है, इनका माइंड फ्रीक है ना, बहुत सही बंदा है। वही वही कितने राउंड क्लच करता है वो हर माइंड फ्रीक, मतलब कंसिस्टेंट प्लेयर। बहुत भाई, 2v4 2v5 पूरे कन्वर्ट कर देता भाई हम्म, राउंड। वो मार दिया टेक्सचर ने। टेक्सचर ही लेने जाएगा पक्का। योरू नहीं खेला इसने इस मैच। ये राउंड हार गए ना ये गलती से, बहुत पिट जाएंगे ये। फिर से नोटिस पर किया क्या इनका उनके पास म्यूट। सेंटिनल नहीं है फिर से उनके पास। हम्म, अरे जोजी भाई, हम्म। आयरन मैन 4 आ रही है। अब कौन सी? हाँ, आयरन मैन 4 आ रही है। अच्छा हाँ हाँ, उसमें उसकी बेटी है आयरन मैन। नहीं नहीं, बेटी तो है ही है, वो भी वापस आएगा, उसको दोबारा साइन कर लिया। नहीं अच्छा, दोबारा कब आ जाएगा भाई? हाँ, दोबारा साइन कर लिया, मल्टीवर्स से लाएंगे शायद अरे उसको। हाँ हाँ, मैंने सुना था शायद सेट पे ना, वो दिखा भी पता है शूटिंग में। हाँ, दिखा भी मार्वल है। वाले से पगला गया है क्या? अरे पगला अरे नहीं मार्वल गए वालों का भाई साहब, वही तो है दिवाला जिसकी निकल वजह रहा है आजकल, वही तो है इसीलिए। जिसकी वजह से ये एवेंजर मार्वल्स चली है पूरी। उसकी बेटी वही तो है, सहरा। हाँ, सहरा वो तो बाद वाली में वाली। वो बाद में आई है भाई साहब। कौन सी सीरीज थी वो? सीरीज थोड़ी आई है अभी वो, अभी तो आनी है नहीं उसकी भी नहीं, सीरीज। सीरीज में नहीं थी वो लड़की सहरा, सहरा नाम किसमें? से। किसमें? एक सीरीज नहीं थी जिसमें वो सहरा नाम से थी, सहरा नाम था उसका ऐसे सीरीज? कुछ। वो क्या रिटेक किया इन लोगों ने। सीरीज? सीरीज तो कोई भी नहीं है। कौन सी थी यार वो सीरीज, वो वाली जिसमें वो मर जाती है। भाई मीटियोर मारेगा देखना। मर गया, मार दिया भाई। भाई इनका मीटियोर बहुत बढ़िया खेलता है। ला क्या मच की। यार T1 नहीं क्वालिफाई कर पाई, T1 बहुत स्ट्रांग लग रही थी मुझे, उनके जेनजी पास अच्छी बहुत टीम सही है रे, प्लेयर बहुत थे। अच्छी टीम है, ऐसे फाइनल जीती। इस बार मुझे लगा था T1 बहुत स्ट्रांग है, T1 क्वालिफाई कर जाएगा, T1 नहीं कर पाई। मोहित भाई मूड में। अरे मोहित तो इसमें था ना, ग्लोबल स्पोर्ट में था ना मोहित ना। मोनियत किसमें था? GEN.G में आए थे, जी में आया था, उससे पहले पता नहीं कौन सी टीम में थे मोनियत। माइंड दे फ्री। स्प्रे, दे स्प्रे, दे। गया गया गया। ओ भाई मर गया। देखा इन्होंने कितना अच्छा रीड करा, वो आगे पुश नहीं करा उसने, तब भी वो सेव कर। आगा। भाई ये तो अटैकिंग में ऑफ लेके मारेगा देखिए, अटैकिंग में ऑफ मारता है सीधा। यार मैं तो जिंग को मिस कर रहा हूँ, जिंग को, बेचारा। जिंग को मिस कर रहा हूँ मैं।
इन्होंने भाई समथिंग को सही वो करा, मतलब समथिंग को सही लिया इन्होंने वैसे। पता है एक तो है ना ये सिंगापुर की ये जैसे रैंक राइड वगैरह करते हैं ना, उसमें भी बहुत सही प्लेयर आते हैं। आधा कंपटीशन तो इनका वैसे ही हो जाता कवर अप, रैंक राइड कर करके। हाँ सिंगापुर में बढ़िया लॉबी आती है ना बंदों की, ऐसा लगता है कॉम्पिटिटिव ही खेले होंगे पूरा। अजी ओ माय गॉड ओ भाई भाई भाई, देख लिया उसने, देख लिया उसने, उसको मार हे भाई दिया। ओ ओ भाई उसने मार दिया। अल्ट अल्ट है उनके पास, ऑफ लिख था भाई ऑफ भी है उसके पास। ऑपरेटर लग रही तो बहुत मुश्किल है यार ये। मार देगा वो, देखना। ट्रेड ले लिया भाई उसने। और कितना बढ़िया। हाई सेंसिटिव खेल रहा है ना अंदर। Well, you see the danger of how fast this man is with the operator. The problem though is he's not going to be able to have it for this round. They didn't have तुम्हें याद है जब एसके रोसी ने इसी मैप में वो हक दिया था, मतलब वो कर दिया था, मिस कर दिया था, उसके बाद से वरना इंडिया उस टाइम तो क्वालिफाई कर जाती। देखो यहाँ से यस भाई देखा मैंने क्या वो वाला मैच भी हुआ। देखा मैंने उसे एक्चुअल में अगर उसका अल्ट आ गया था उसका फिर वाइपर का, फिर वहां से गेम हार गई। वरना वरना फुल सेंस को हरा देती हो वीसीटी टीम को। फिलहाल तो अच्छा कर रहा है जी अब बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया। वो अब तो है जी के मुझे चांसेस का बहुत कम लग रहे हैं चांसेस जी के, मतलब भाई जेएनजी ने क्या, एक बात है जेएनजी ने काउंटर कर दिया भाई इनको बहुत सही। अभी तक तो बढ़िया काउंटर कर रहे हैं। नाइस रही दवाई मीटियर, ये वाली स्किन अच्छी है नाइफ की, ये वाली वाला स्किन, ये वाली जो उसके बाद मीटियर के पास है। दवाई दवाई बोलता है, पीवाई को दवाई बोलता है ये। ड्रॉप करना था वहाँ पे, सही बोल रहा, ड्रॉप करना था। अल्ट है इसके पास, पर ये अल्ट मार के किल निकाल सकते हैं। अबे हक दिया नहीं, तो साथ दोनों में आ गए साथ। क्या ड्रैग मारे? और लग रहा है हार जाएगी 11 से यार, ऐसा लग रहा है, लग रहा है मुझे। जेएनजी पूरे फॉर्म में, वही पांचों के पांचों बंदे बिल्कुल कोऑर्डिनेट पे खेल रहे। इनके एम भी बढ़िया लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए तो भाई ये लोग क्या स्क्रीन टेयर करके खेलते हैं क्या वो 440 वाला रेजोल्यूशन में खेलते हैं ये। मुझे लग रहा है। कुछ कुछ मैप में ना वो सही चलता है रेजोल्यूशन। अरे सुनना तुम्हारा ये चल रहा है क्या बहुत ज्यादा डिले चल रहा है क्या तुम्हारा बड़े हो हो सकता है जो जी भाई। अरे हाँ तुम इसका स्ट्रीम देख रहे हो क्या मैं इधर देख रहा था क्या बोलते हैं उसको वीसीटी देख रहा था ट्विच पे डायरेक्ट हाँ ट्विच पे मतलब लैग वो कम होता है ना, ट्विच पे सही चल डिले रहा है तो। ट्विच पे।
हाँ beneficial. मैं भी टिच पे ही देख रहा हूँ ना Off to a bit of a तो slow start as well, but also it is just reliant on those individuals a lot of the time. I think we saw some of the statistics posted earlier is like you compare the 5v4 conversion, Gen.G, I think it's like 70 something percent. For Give PRX, away. it's only like 60 something. But then they have a higher 4v5 because they have those individuals that can turn rounds on their head. It's not the greatest stat Oh my line in god, the let's world go PRX. because you'd rather just be winning the rounds outright. अब इनके पास बाय भी नहीं है Online because they've been okay. ऑडिट भी नहीं आया अभी तो जेट का ये ऑडिट लेने आएगा पक्का Seen the numbers of clutches from Gen.G versus PRX, but PRX also 4 राउंड लगातार निकाल दिए इन्होंने players like Forsaken previously bailed them from so many situations. Now, weaker weapons like we ओ said, and close range हमारा surprise factor is probably the best way to find value. Mind Freak has at least picked up one, but Karen is making this one look easy. 3 kills already under his belt, 40 HP, and he's tucking in the corner. It looks like he's going to get this one Opus easily with Mind Freak. अच्छा ये मन That's his 4th kill of the round. ओ भाई Confidence builder if ever I've seen one. भाई And that's the बहुत last सही thing यूटिलिटी PRX ओ ये want to मरा give to their opponent. Again, not talking about them losing the round. That's expected. It's the amount of players still alive on Gen.G. They're farming credit. मरेगा ये And someone मरेगा has आराम picked से up one more. 3 भाई go. सब One hell of a समथिंग double अकेला fight. क्या करेगा And it ain't gonna happen. Look at that firing squad ये down क्या below. यूटिलिटी और क्या कॉम्बिनेशन से मार रहे हैं जेएनजी Against any other team, maybe it उसने is. अल्ट तुम्हारा Gen.G have been so good just playing off of the कलाइट site नहीं and किया trading effectively. They don't even अबे lose another member of the squad. 5 and 2, and I love the sort of switch up in tempo, ओ especially भाई in these end of स्पैम eco rounds. They're not कितना allowing गंदा their स्पैम opponents पड़ा to really figure out anything that's going on. You had the instant TP to the back of site. ये हाई सेंसी पे कैसे खेल लेता है So भाई once the teams quickly execute, मसल अरे मेरा मेमोरी है दोस्त भी खेलता है just keeps the spot, keeps the मसल control. मेमोरी अच्छे है से हाई वो नहीं खेल सेंस लेता में भाई खेलता है ऐसे में To get too far ahead, and he even takes मसल में himself 4 kills while he's at it, so why not? अगर मैं मेरी भी क्या इनका पुराने चैंपियन हाई इम्पोर्ट तो है भाई सेंस पुराने चैंपियन इम्पोर्ट तो है Pressure applied. Defense has been tested again and again. They failed the test again and again. 5 in a row. पता है वो नहीं था क्या नाम है ऑप्टिक का ये वो कितनी लो सेंसी पे खेलता है भयंकर No smokes for the way back through. इसकी टेल कैसे खेलते हैं मुझे भी सिखाओ थोड़ा सा मुझे भी जानना है तो स्क्रीन को चौड़ाई वाला कैसे करते हैं इसकी टेलिंग वाला अरे रेजोल्यूशन में जाके मैंने भी तो कर रखा है पर मुझे मेरा स्ट्रीम पे करना है कैसे स्ट्रीम पे मुझे करना है कैसे टीम पे तुम रेजोल्यूशन जाओ ना पहले गेम में इस पे थोड़ी ना होगा यूट्यूब पे तो इन गेम पे होगा इन गेम में जाके रेजोल्यूशन वो कर देना अपना क्या 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 अरे स्क्रीन चौड़ा वाला पूछ रहे हैं ये स्ट्रेच है स्क्रीन चौड़ी कैसे करते हैं हाँ स्ट्रेच हमारा जीपी कौन सा है मेरे को एनवीडिया का पता है सिर्फ तो सेटिंग में जाके हो जाएगा जीपीयू का क्या करना उसका नहीं नहीं स्ट्रेच है तुम कस्टम वाला पूछ रहा है ना ये स्ट्रेच कस्टम वाला पूछ रहा है ना क्या नॉर्मल वाला कस्टम वाला तो वैसे ब्रो भी हो कैसे जाएगा मैं बढ़िया बताओ हाँ बोल रहा हूँ ये कस्टम कस्टम स्ट्रेच वाला चाहिए तो तो कस्टम स्ट्रेच करने के लिए वो जीपीयू के सेटिंग में जाना पड़ेगा बाहर जो होता है ना जीपीयू का सेटिंग उधर जाना पड़ेगा सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेच चाहिए तो इनके में हो जाएगा 4:3 कौन सा भी रेजोल्यूशन से सेलेक्ट कर लो 4:3 का हो जाएगा इन गेम डायरेक्ट मतलब जो होता है ना 1440 1080 का जो स्ट्रेच है ना वो कस्टम करना पड़ता है बाहर से चैंपियन चमक रही है भाई टॉप ट्रैकर का चैंपियन ये कदम क्या है ये कोई भी भाई क्या भाई बेस्ट फ्लैश था भाई बेस्ट फ्लैश था करन का भाई ये 3 बंदे ऊपर स्टैक कर रहे हैं 3-4 बंदे मिड में अरे बाबा ओ भाई भाई गलत सीन है गलत सीन है बेटा समथिंग के पास खेला अगर समथिंग मैं आ गया भाई मॉनेट ने हक दिया लास्ट में Somehow Oh. made it close. The thing is, though, again, you just have to give props to Gen.G. Like the beginning of this round, they were so ready. They had नहीं their whole team just waiting, नहीं भाई नहीं waiting for that push to come through. And sure, the utility from PRX was good onto a couple मेरी of तो players. जेएनजी टीम है वैसे Players were so ready तुमने to पीआरएक्स से come in. पीआरएक्स पे वो कर रहे हो तुम Easy fight. यस मेरी आई एम जेएनजी सपोर्ट यार Yeah, like I said, you know, there was no बुलेट नहीं था क्या बुलेट नहीं था क्या
रेड नहीं था, नहीं बॉडी था। के नीचे था, लेग पे था ये, और कुछ नहीं। थोड़ा सा लेग पूरा हेड पे भी था ना, क्या निकल जाता, अराउंड 1v4 निकाले वो तो हाथ सही लग कांप रहा गए है। होंगे आई थिंक उस समय। 3 बंदे को जब अ, वेरी क्लोज, देखो बोला उसने क्लोज। नहीं, कोई भी अरे नहीं यूटिल पर करने के बाद वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मारना, जो करता है ना यूटिल फेस करने के बाद। उसने टीपी किया ना उधर से तो। तो डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं डिफेंडिंग में अपने, क्या सीन है? अरे एक बात उसके ना शील्ड और एचपी दोनों थी ना, उसके शील्ड और वैसा उसकी शील्ड भी खत्म हो गई ये थी, कौन एचपी फील्डर भी भी पता बहुत है, कम एम थी। बोट है, ये वाला तो एम बोट टाइप की। They know that there's going to be weaker weaponry, so they're just not giving them ओ any भाई ओ भाई ओ close-range भाई fights. Powering up from above, there's not really an easy way to kill him. भाई अब ये This चौड़े में मारने आ रहे हैं somehow manages to टेक्सचर hold वगैरह। still the defenses. Even still, तेरे though, की कौन से this ओ combo भाई looks strong. ओरे ओरे Nade's ओरे still ओरे, available. They've been taking these sites so quickly that they've had no problems just having late क्या utility. रीड कर रहे हैं इनको ढंग से। Wow, the time almost looks like it's gone, trying to bait some space, but it's all ले good from भयंकर ले Gen.G. Another भयंकर। 3-man player surviving. 8 to भाई 2 on इनका the board. ट्रेड भी बहुत बढ़िया आ रहा है। This is PaperX's map. इंस्टेंट They ट्रेड are हो भी। 8 rounds in a row. Other than the pistol in second मतलब round, ये they've achieved पता नहीं nothing. कैसे कॉम्बिनेशन में खेल रहे हैं अंबानी। हाँ वो It's hard to क्या think about. क्या रीड है भाई। It was close, Tom. It comes on the back of a player needing a 4K to get it across the ये line. कौन की वैन पता है, वैंडल भी आनी चाहिए जैसे कि फैंटम है, तो Early वैंडल भी on in आनी the चाहिए। series, on a पता map है that उसने ना was Gen.G absolutely इनके कोच ने ना वो वाला मैप बैन कर दिया था, स्प्लिट when it comes to स्प्लिट वो personal statements, एसेंट वाला। PaperX will इन्होंने इन्होंने बहुत थ्रो करा था ना, for us. We'll उसने एसेंट बैन कर दिया है। एसेंट पिक नहीं करा उसने। put down the first and the second. Magneto as well. हाँ Rockets इस on राउंड point. And with Lakia down, it looks like मजाक है। PaperX are set to finally put another round on the एक board. तरफा ही How भाई, long have they ऐसा लग waited? रहा है ये It's Karen to try to मैं challenge वाला this देख रहा हूँ top मैप opportunity, हाईलाइट उसकी। but it was shut down eventually by something with only one standing. It's an easy win. 8 to 3. PaperX इस बार राउंड निकला, इस बार राउंड निकला। hell of a distance yet to go. अरे कॉल And किसकी आ रही है? it comes off some individual brilliance out of Forsaken. Definitely had support. I think he doesn't get that kill if it's not इस for बार राउंड निकला being इस kill off the close player, but it's at least मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं ईडीजी और उस वो उसकी हाईलाइट देख रहा हूँ, ईडीजी और केसी। even a sort of 8-4 scoreline wouldn't be a complete सेम नहीं होता उनके साथ, 3 राउंड जीते हो बस पूरे मैप में। I'm looking at two operators on the एक attack. मैप में 3 भाई एक क्या मैप में खबर 2। मिला उसको ना, Obviously, it's something that can be dropped, but they are waiting for aggression. मस्त कवर मिला It's इसने coming. It's coming. रेस को 4 सेकंड Spot सॉरी। though, those ops are elsewhere. And that mid control is going to be completely conceded. The golden gun on Lakia. Good to see him showing up. Really swinging. I think he's currently 12 and 6-2 KD on the board and a chance to push it even further at 8 to 3. PaperX tried a mid push, got denied. Now it seems like they're caught. One foot in the grave. They don't know whether to continue with that aggression or reset for the later play. भाग के भाई, भाग के Now make तीनों। a decision. With a minute 5 seconds on the clock, they don't need to rush. They're holding tight, waiting for PaperX to make the mistake. They're so nervous of someone being within the smokes that are placed. Most of the time, those smokes are being put down by Munyet just to deter aggression, which is exactly what it's done. Texture, though, might have a fight. Because they're so passive, the operator could be so valuable here. There's no one on the backside once again, but the spike... अटैकिंग ऑफ कौन लेता है भाई? ठीक है, इतनी कवरेज आ गई, ठीक है भाई। Peek out from something. Oh, I think Meteor's seen him, but समथिंग की ऑफ है वो it won't शायद। matter too much for now. ना ना Gonna ना activate the dash. Something goes peeking, but now I'm just looking at ना, that राउंड time. हार गए साइड पे तीनों। कोई नहीं है, बी के साइड पे कोई नहीं है। Cleared out, so the spike will be able to go down. डॉल ऑफ चल रहा This है, has to be a complete retake. Oh, nice shot by Lakia as well. डॉल ऑफ कर रहा है लास्ट राउंड में। Spike drop. An opportunity indeed with that spike down. 15 seconds left. It's time for Gen.G to रेंज get को it देखो on. क्या बोल रहा। To step out from that corner, and he's being caught. They need a dive on अरे that बीमेन spike. कैसे, बीमेन पूरा पीछे छोड़ दिया। हाँ Are in their way. ओहो It's not a death क्या था? sentence, like you said. भाई क्या हेड मारा उसने चलते चलते। Celebrate. This has been a strong performance from Gen.G. Lakia leading the अबे charge. स्पाइक ही डाउन है। Plenty more. गया राउंड, इधर राउंड गया, इधर राउंड गया, You have to hope बोला राउंड गया, they've got something special planned on their attack. लेट करते जा रहा है। This was a really, really rough. अरे इन्होंने मिड में बहुत टाइम लगा दिया। It is definitely a performing. Let's hear from him now. 4 सेकंड क्या खेल रहा है भाई? पिछली बार ही मस्त खेल रहा था वो जेनजी के मुकाबले में, इस बार अच्छा खेल रहा है।
Find the game. It. करेक्ट। कोई एकदम से स्ट्रीम देखेगा वो बोलेगा बे आसमा। अच्छा मंचकी ने ज्वाइन करा ना इनकी टीम को। Off in that first half, 8-4 when we left you. Now it's time for Gen.G to close this match out. That's their mindset going in to close this PRX. That's their mindset going in to Hi. Hi. diving into sites. The thing is, he had अच्छा तुम तो वो देख रहे हो causing ना? a lot of chaos for him. Now it's a little bit more conventional, but that's never the name of the game with PRX. In he goes. Something's looking for a fight. Paranoia is perfect. Snake bite's even better. And with 1 HP, Lucky doesn't stand a chance. The rest of the squad comes in to save him. They've ended up falling to a पहला राउंड क्या लगता है कौन जीतेगा? Meteor left standing and is back. इनके वो तीन अभी क्या हो रहा? Almost was a call हेलो लैग हो गया too. कुछ नहीं कैसे। Yeah, the Munya needed to hit that headshot at the end. It looked like there was a realm where Meteor managed to turn that back. Even still, though, it is the pistol round for PRX, and that is the thing. Even with this compositional change, the thing that it adds is, firstly, you're going to have that paranoia available for Munya to sort of set them up in, as we saw at the beginning of that अरे round. भाई But also, और गेम रेस क्या हाल? continuously see the switch up of who's coming in first. So you're going अभी to तो have वो Forsaken चल रहा है आरआर कुछ अभी तो मेरा आरआर वो फोर maybe if he has क्या? that operator in hand and something in हैं? that नहीं back. मोनियत भी चल रहा है। Forsaken. They are a deadly अरे वो duo तो हाँ इधर तो whether वो the चल aura रहा है is क्या there or कहते not. हैं VCT There's a reason that और everyone is हमारे going इधर चल रहा है व्रत nice का shot by खाना। Meteor. Opportunity for more. इनका अलग मोनियत सभी बहुत हो गलत रहा कर रहा है। Forsaken's very क्या? little big help to any क्या कह रहे हो teammates who जोजी end भाई? up taking that fight. We may talk about the outlaw, but this man's making it work with the marshal, the cheaper weapon. And okay, an opportunity if they had have spotted the player in the corner. इन लोग को इतने ब्राइटनेस में दिखता कैसा है रे क्रॉसर? fell to a snake bite after being पता नहीं दिखता था वो। What is that? चश्मे तभी तो लगा रखे उन्होंने सनग्लासेस वाले। हाँ ये बात है चश्मे तभी तो लगा अरे रखे उसके हील दे दवाई उसके हील दे। Karen अरे ब्राइटनेस देखी भाई जाए मॉनिटर भाई साहब भाई मुंह पे तेरी चिपका के स्ट्रीम इतनी खेलते लैग हैं। कर रही है भाई जोजी भाई स्ट्रीम लैग कर रही है बहुत ज्यादा। pick up a weapon. चलो ठीक है। Depends though, because PRX, that's the thing. कहाँ जा रहा है खेल? Blitz plays तू भी for देख PRX have नहीं? been so fast that there's actually still loads of time. कब They've बांध not दिया? over-aggressed. They've just thrown out the guiding light, the flash to हैंड रैक भाई get them बोलो बोलो। a little bit of extra मैं कह रहा हूँ वो सब तो information. ठीक है लेकिन Now, स्क्रीन भी Karen तो वो does मुंह have पे himself चिपका a के paranoid. खेलते He's हैं। brought up his full अरे belt. उनका ये पैनल रहेगा ना TN पैनल तो Isolate one of these jewels. ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। For now, at least, it seems like he's हाँ waiting ब्लड for the रिडक्शन का कम करके खेलता है ना Smoke will तो give that away. The हाँ spike चलेगा। being planted. लैग कर रहा है एक Now मिनट। they can look to try and see if there's भाई any तुम्हारी movement. स्ट्रीम बहुत लैग कर रही है भाई। Well, there you have it. अरे तुम ये दूसरे की स्ट्रीम पे देखते हैं इसलिए लैग करती हो तुम लैग और वहाँ डिले चलाओ बहुत ना। है तुम लोग। भाई मेरा स्क्रीन में मैच खत्म होके 10-15 सेकंड के बाद तुम्हारे दिखता है पता है तुम लोग तब देखते हो वो वाला राउंड पता अच्छा है। अच्छा नहीं वैलोरेंट तो मैं ज्यादातर वही करता हूँ मुझे डिले ही ऑनलाइन ही करता हूँ। देखना नहीं पड़ेगा। डिले नहीं तुम दूसरे के स्ट्रीम देख रहे हो ना कमबैक हो इसलिए रहा डिले है लग रहा कमबैक हो रहा हाँ है है। समझ ये गया बोल समझ रहा गया हूँ। समझ गया वो होता है हाँ वो होता है वो होता है होता है वो चक्कर। कमबैक तो होगा भाई इनके बाद। ये शॉट क्या मारा था ये लोग? कोई नहीं मैं थोड़ी देर के लिए डेफिन हूँ जोजी भाई। जोजी भाई ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ Three away from the Blade Storm, even just a bit of damage in this round, and he'll have something for the next. Now, this purchase from PRX अब has क्या लगता है ये राउंड जेनजी ले जाएगी देखना। You've got Forsaken and Mind Freak
down at 150 credits. So for the next round, they might be in a little bit of trouble. Forsaken, though, he's just gone walkabouts. He's sprinting after Lakia, but he isn't going to be able to land the shot. And at least for now, it's only going to be the control that's lost for Gen.G. No heavy price tag associated with it. Down in vent, this is an अरे पड़ा है नेट कर दो ना, वेंट में नेट कर दो ना. on each other's head. It couldn't be easier for Lakia, signed, sealed, and delivered to this. पता नहीं ना उनको. To heal up for his teammate. Munchkin's going to be back up in fighting. गलत सीन हो गया. 5v3. That's another nail in the coffin for PRX. Tagged up a little. अच्छा स्ट्रीम कैसे बंद कर सकते हैं? Clinical. As now there's only 2 attackers standing. सब ठीक. Yeah, he almost killed Devi through the screen as well. मैंने बोला था ना Gen.G जीत जाएगी ये मैच. ये वाला. हाँ बोल नहीं सकते, लेकिन Gen.G का रेट अच्छा है, लेकिन डिफेंड लोटिंग लोग ना डिफेंडिंग निकल नहीं पा रहे थे. 1v5 scenario. अब उनका आईजीएल मचकिन है नहीं, मचकिन आईजीएल मंच के बहुत सही प्लेयर है भाई ये. तो मतलब इनकी एक बात है, ओवर एग्रेशन यूज नहीं करते. दवाई मरेगा देखना मरेगा. 5 players alive, you know. It's a little scary because it feels like since the very beginning of some of these halves, Gen.G haven't had a problem when it comes to economy. भाई इन्होंने भयंकर की बनाया भी कैसा मैच मेकिंग. दोनों एशिया टीम, दोनों एनए टीम आपस में ही करा दिया इन्होंने. सेव राउंड होगा, आई थिंक सेव राउंड होगा. नहीं टेक्सचर भाई, टेक्सचर बॉटम में इनका अभी भी जीत रहे. अबे ये क्या? हेलो ये आइए. हेलो ए डार्क भाई, क्या हाल? आ गए तुम? हेलो बोलो. हाँ डार्क भाई आ गए तुम? आ गया. ओ जोजी भाई देखो जरा कौन आया है. बात नहीं हो रही है मेरे से. सही है सही. वो उठाते ही नहीं, फोन तो उठाते ही नहीं, वो बिजी रहते हैं. ना फोन तो उठाया नहीं मैंने. हाँ इसका कन्वर्शन दो. देख लो डार्क भाई. क्या बोलूं. ना टीम के बीसी भी नहीं आते मिलने के लिए. क्या ना भाई ये टीम के भी डिस्कॉर्ड पे नहीं आते. कहाँ बिजी रहते हैं. टाइमिंग भी तो होनी चाहिए ना, वही तो दिक्कत हो रही है. आपकी टाइम मेरी टाइम मैच थोड़ी हो रही. ये तो दिक्कत है. बात होती है, हमारी तो डेली बात होती है. हाँ आप भाग जाते हो छोड़. अरे हमें तो बीच का कनेक्शन ही ऐसा मिला हुआ है, डेली बात करो. वो भी बात है. ऑफिस पे भी वही हो जाता है. क्या काम करते हो रोहित यार? अभी तो फिलहाल मैं बताऊंगा, ऑफ स्ट्रीम बताऊंगा. चलो बात करो, मैं थोड़ी देर के लिए डेफिन हूँ. अच्छा. भाई मेरे जो मैं बोला था वो देखिएगा ना प्लीज. देखिए थोड़ी जरूरत है मुझे, कुछ बात है. हाँ और देखिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरा मैं कुछ नहीं कर सकता. अरे नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, देख रहा हूँ. 10 भी चलेगा ना, 10 11 भी चलेगा. ठीक है 10 11 भी चलेगा. वैसे मैं एक चीज बता दूं, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. ठीक है हाँ ठीक है मैं जान रहा हूँ. मैं अंदाजा बोल रहा हूँ 10 11 भी चलेगा. ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा. एसएम कुमार ब्रो, Gen.G मस्त है. हाँ ब्रो Gen.G मस्त खेल रहा है, एकदम मस्त खेल रहा है Gen.G. विजिट देखते हो ट्रक भाई? विजिट हाँ क्या बोल रहे हो? ट्रक भाई पूछ रहा हूँ, ट्रक भाई से विजिट देखते हो? क्या देखता ना विजिट हाँ देख क्यों नहीं रहे हो अभी?
ना अभी तो टाइमिंग का नहीं बैठ रहा है ना सही। पीआरएस का मैच था, पीआरएस बीच से में 2 मैच देखे थे, बाकी तो टाइम ही नहीं मिला तो नहीं देख पाया, तो मैंने सोचा बाद में कभी देख लूंगा। भूल जाता हूँ, अरे ये गाने चलने के बाद म्यूट करना भूल जाता हूँ मैं। मेरे को वेट लग जाएगी। हाँ, बात ये। नहीं, क्लेम लगने दे, स्ट्राइक नहीं आना चाहिए रे, वो दिक्कत है। क्लेम तो हाँ मतलब लगने दे। वो कॉपीराइट तो लगेंगे, लेकिन सीन क्या स्ट्राइक होता नहीं है आना पता है चाहिए, वो। स्ट्राइक नहीं आना चाहिए बस, और दिक्कत नहीं है। स्ट्राइक नहीं आएगी, लेकिन कुछ और नहीं नहीं, इशू आएंगे। आता है ब्रो, आता है, स्ट्राइक क्यों नहीं आता है, आता है। है ना। वो देखो ऐसे नहीं होता है, मतलब जो ओनर है उसके ऊपर डिपेंड है, समझ रहे हो। वो तो पता है मेरे को, लेकिन मतलब चांसेस ज़्यादा ज़्यादा रहेगा ना। हम्म। एक एक यूट्यूब पे एक कंटेंट रहता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बड़े जो चैनल होता है ना, उनके लिए हाँ कंटेंट आड़े रहता है। ओनर भी नहीं देता, पता है वो, तो स्ट्राइक्स वो सिस्टम से लग जाता है कभी कभार ऑटोमेटिक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसे सीन है वैसा है। नहीं 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 मैंने नहीं, एक बार ओनर लास्ट, के ऊपर पता डिपेंड है, है। हाँ वो अलग है, लेकिन जो होता है ना ऑटोमेटेड रहता है थोड़े यूट्यूब में, जो मतलब सारे यूट्यूबर्स को नहीं 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 मिलेगा, जो पर्टिकुलरली समझ लेना तीसरे जैसे होते हैं ना हम्म। चैनल, उनको रहता है, जो जो बोलते हैं ना उसको चैनल नहीं नहीं, आईडी, वो वही कंटेंट तो आईडी कह रहा को हूँ, वो खुद से दे रहे हैं ना, इसीलिए। खुद से नहीं देख, तो समझ लेना, तो कोई टी सीरीज का गाने चला ले, 5 से 10 सेकंड के वो ऊपर तो चला आएंगे ले, ही आएंगे, वो तो आएंगे ही इंस्टेंट आएंगे। भाई, इंस्टेंट आता है, इंस्टेंट तो थोड़ी ना तेरा चैनल देखते बैठे रहेंगे। हाँ। नहीं नहीं, वो तो ला के रखा है सीधा। वो हाँ तो। वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ, जो होते हैं ना हाँ थोड़े तो। कंटेंट हाँ आईडी में तो ऑटोमेटेड उन्होंने तो वो रहता खुद है। से ला के रखा है वो चीज, हाँ वही तो वही कह रहा बोल हूँ, रहा तो हूँ, उनके हाँ। ऊपर डिपेंड है। कुछ चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें वो तो मुश्किल मुश्किल होगा, ये बोल और रहा हूँ। सबसे बड़ी बात वो नहीं है, मतलब मान लो अभी कॉपीराइट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तो वो चाहे तो आपके लिए ना, आपका पूरा 50% ऐसा कह सकता है, जो नहीं आपने मेरी ऑडियो यूज करे हो तो वो तो फिफ्टी जाएगा, परसेंट क्लेम जाएगा, क्लेम जाएगा वो, लेकिन जो होता है ना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्राइक। ट्राई कैसे नहीं। थोड़ी ना भाई वो करता अबे शायद। से पता है, तुम अभी जब तुम कोई समझ लेना मोनेटाइज वीडियो अपलोड डाला है, उस पर क्लेम भी नहीं आया है, तुम अगले 6 महीने में, साल में, 2 साल में तेरे को क्लेम आएगा ही आएगा उस वीडियो पे। मेरा नहीं नहीं। फर्स्ट वाला मोनेटाइज था सीएस का, उसका पता है 3 साल बाद आया उसका क्लेम मेरे को, कॉर्पोरेट क्लेम। तब मैंने और जो क्या होता ना, बोला तब उसने? मोनेटाइज, नहीं नहीं कुछ नहीं बोला, मेरे को पता है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, पता है। हम्म। जब तुम वीडियो बनाने से पहले उससे परमिशन लिया, तो वो ये कर देगा, तेरा वो वाला गाने के लिए तेरे को मोनेटाइज करने के लिए देगा वो, जो ओनर होगा, जो भी वीडियो का ओरिजिनल ओनर, वो करने के लिए ओ देगा भाई। मोनेटाइज। तुम उसकी बिना परमिशन के वीडियो बनाया, अगले थोड़े दिन में उसको क्लेम है, तो उसका गलती नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा एक्चुअल में। स्प्लिट क्यों हाँ चुनी जी। ये पीआरएस में समझ नहीं आई है, स्प्लिट क्यों चुनी? अरे उनका स्ट्रॉन्ग मैप है स्प्लिट। बहुत घंटे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मैप पे है। डिफेंडिंग अरे चुने भाई, का, डिफेंडिंग तो घंटा वो कुछ नहीं कर पाए लोग। भाई जेएनजी अच्छा खेल रही है। और क्या करना, और उन्होंने यार वो तो बोल रहे थे, वो बकचोदी ये टेस्ट करी। में तो की कॉपर अच्छे खेल रही थी वो। उन्होंने बकचोदी और करी कि उनको जीजी हो गया भाई फोर्थ मैच, से फोर्थ सेकंड को ना वो नहीं देना था रेज। हो गया मैच। एकदम ओपी बीसी टीम। ओह नाइस। ओ भाई उसने रिपोजिशन कर लिया ये भाई। अपिल नहीं रखना पड़ेगा। गया। ये राउंड तो, पड़ गया। ये राउंड तो पीआरएस का है। पिछले पिछले मैच में उसने तो मैं यूज कर रहा हूँ। इनके बाद 3-3 अल्ट आ जाएंगे क्या अब। लग रहा है भाई पीआरएस, क्या लग रहा है वेंडर, तो क्या लग रहा है समथिंग। इनके पास 3-3 अल्ट है बैंकर की। एक राउंड तो निकल ही जाएगा इनका। तो ये लोग बस 4 बाय सेकंड में राउंड पे फिर है। मारा।
और फेकन ने फिर मारा स्मोक बैंक मारा उसने। क्या समथिंग से जिंग को मिस करता था, कर रहा हूँ जिंग बहुत अच्छा प्लेयर था यार, जिंग भाई। और अब पेल दिया भाई उसने जिंग कब आएगा और वापस? सेकंड गया 2 साल बाद 2 साल अगले साल के बाद आएगा वो 2026 में ही आएगा वो। ओ भाई नहीं 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 मार दिया उसने वेंकर मीटियोर को। 44 है। लाइक क्यों कर रहा है कैसे? हम्म क्या कर रहा है वापस ये आएंगे भाई। जनवरी का रेट देखो 2 बंदे अभी भी ये पे है। वो नाइस स्प्रे रे, कौन था मुझे? ओ ला भाई जी जी प्लांट ही नहीं होगा। टाइम ही नहीं है। जी हो गया। नाइस फिनिशर है, नाइस फिनिशर। भाई मचकिन है भाई मचकिन। उसने मारा और उसने मतलब राइट में स्प्रे ट्रांसफर करा कि उसको पता था राइट में एक मैं और आया था। बट मैं आया। There was a big talking point, not just from the desk, but even from the team themselves when they were being interviewed. भाई Even though मचकिन the भाई calls were good, we had some बेस्ट promising players on the आईजीएल। field. At the end of the day, this was a Gen.G map. 13-8 doesn't sell it. This was convincing, and now they move on to their pick of Lotus after this. मोनियत और दवाई भाई भाई लग रहे हैं। ये तो दवाई। इन्होंने कोच का रिएक्शन नहीं दिखाया हुए। कोच का रिएक्शन वेयर इज कोच। कोच का रिएक्शन नहीं दिखाया। नहीं देखा जानबूझ के वो। बेचारा ये हाँ जी। डाक भाई अभी भी स्ट्रीम कर रहे हो? हाँ हाँ ऐसा चल रही है क्या? आप पैल वल खेल रहे होंगे पक्का, गारंटेड। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हो चुका है खत्म बस। 50 लेवल करना है, क्या सब स्टोरी पोकेमोन खत्म हो तो चुकी पकड़ है लिया। इसकी? नहीं सारे पोकेमोन तो पकड़ ही लिया, अब 50 लेवल अच्छा। करके। ओके विष्णु भाई बाय। कहीं जल्दी है क्या? और क्या बच गया? एस्ट्रागॉन बचा है ना एक। अच्छा और ये बचा है प्लाज्मामू। इसका नाम देख लो अरे भाई। ब्लाजामू। आप क्या खेल रहे हो आरर भाई? क्या कह रहे हो? आप क्या खेल रहे हो? अभी तो कुछ नहीं खेल रहा।
ये आज शायद स्ट्रीम ना करूं। क्यों? अरे व्रत है, थोड़ी तबीयत भी खराब है। अच्छा अच्छा। वीडियोस भी कई सारी पड़ी हुई है एडिटिंग के लिए। क्या करे बंदा, क्या करूं मैं जिंदगी में, क्या कर, इतनी नन्ही सी डायरेक्ट जान में करेंगे। क्या करूं। डायरेक्ट। हैं हाँ डार्क भाई? ओ डार्क भाई, हाँ हाँ। मैं कह रहा हूँ इतनी नन्ही सी जान हूँ मैं, इतनी सारी I वीडियोस don't care वगैरह what सब anyone पड़ी हुई है एडिट says. करने, क्या करूँ क्या मैं, आप खुद कहाँ एडिट जाऊँ? करते हो? हाँ। हैं, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, नन्ही सी जान लेके कहाँ जाऊँ मैं? बात तो सही है। शॉर्ट्स नहीं लग रहे थे, अब अभी हो गया, अभी शॉर्ट्स लगेंगे। बाय है 7 एलिजिबल यूजर्स है। अन्ना जेनजी लिखेगा नहीं मिलेगा ना, पीआरएक्स लिखना ही पड़ेगा। क्या? हाँ ये तो स्कैम है। वो मैंने सेट किया था। क्या नहीं मिलेगा? गिव अवे पोस्टर का, क्या सेक्सी गिव अवे पोस्टर। कर रहा है? अन्ना पोस्टर मद्रिद वाला, ए, नोट। कौन सा? ये वाला, कौन सा? दिखाओ। ये वाला पोस्टर अन्ना। नीचे सारे वो टीम से जिनको मैंने कोचिंग दी थी। ये देखो, ये कहाँ से मिला? डायरेक्ट हेडक्वार्टर से ना। फोन लगाओ राइट को। लगा सकते, लगा सकते। मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा? हाँ पीआरएक्स लिखा है। Where is पोस्टर? फोन लगाओ। तेरा नाम क्यों नहीं आ रहा? अन्ना का भी नहीं आ रहा। मॉड्स अलाउड नहीं है क्या? हाँ मॉड्स मॉड्स आया, अन्ना का आया, तेरा आया? आया हाँ। मॉड्स को। ठीक है ठीक है ठीक है, डन सीन। तो जो जीतेगा उनको इंस्टा आईडी देना है और बाद में एड्रेस लेंगे। और फिर और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो उनका कुछ लेना देना नहीं है, बस पूछ रहा था। गो कर रहा हूँ। रोल इट। चेहरे अभी। आकाश, आकाश भाई जीत जेनजी गया जीत ना जाएगी अगेंस्ट ऑल गारंटेड है। ऑड्स, हेलो डार्क, हेलो क्योंकि गाइस, क्या उसके हाल? आकाश गुंड इधर आओ, में इधर आओ। है। जेनजी आराम से जीपे जीतेगी। का आईडी दो। डार्क लाइट जोन। हाँ हाँ बोलो। डार्क, अरे भूल गया क्या है भाई तू? हैं? क्यों भूल गया? अरे तू जानता नहीं मुझे, भूल भी है तू? अरे भैया अरे नहीं, छोड़। मैं डिस्कॉर्ड नहीं देखा हूँ, गेम के अंदर हूँ। They're looking good. अरे बांझो, डेविल्स आई। बांझो बांझो अच्छा बांझो। हाँ हाँ बताओ। और तुम मेरे बांझो। को वो अकाउंट देने वाले थे ना? अरे मैं उसके बाद आया तो बहुत दिनों के बाद ना, वो भी तो देख लो। कितने दिनों बाद आए भाई? पूछ लो। कितने दिनों बाद भाई बताओ। आर जी तब भी कितना दिन हो गए? दिन थोड़े याद रहेगा, महीने के हो गए। मैं तो, मेरे को 6-7 महीने हो गए गए हुए। क्या करते हुए? नहीं हो पाएगा, चेंज करना पड़ेगा। अरे वो तो उन्होंने लाया नहीं ना। मेरे पीछे क्यों बाबला है ये? गया मैं, बच गया। तो क्या करना ये वाला राउंड में जो किया ना, जो रिप्लाई दे रहा ना, वो वाला टीपी अच्छा था रोमैन का, करन का। जो बी वो साइड डार्क पे भैया। डिफॉल्ट से वो मेन में टीपी किया ना डब्बे पे, वो वाला बहुत अच्छा था टीपी। क्या ओमन का? हाँ ओमन का। लेकिन भाई ये मैच पेरक जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। वो तो गेम के मतलब स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। सचिन कुलकर्णी मराठी है? नहीं मराठी नहीं है,
मेरा छोटा भाई मैसेज कर रहा है भाई ये। मेरा जीवल उसमें लॉगिन है ना उसके फोन पे, वो मैसेज कर रहा है। तो डार्क लाइट डार्क भैया हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। तो क्या करना है अब अकाउंट का? एक सेकंड रुको। ठीक है भैया। नहीं मेरा एक कुछ हुआ, दूसरा अकाउंट मैंने लॉगिन नहीं किया तो उधर पता नहीं कुछ पॉर्न न्यूड्स का सीन हो गया, तो हैं? वो अकाउंट मेरे को डिलीट करना पड़ा। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? I'm starting the video now. I didn't realize we were gonna be watching a movie. What is that? What? क्या स्कोर है मैच का, क्या खेल रहे हो? It's insane. I एमो definitely खत्म। saw the character have like an orb of some sort. हो गई खत्म मैच? Muito diferente, muito अरे मैं वैलो नहीं खेल रहा हूँ। फिर क्या खेल रहे हो भैया? पाल वर्ल्ड। पाल वर्ल्ड? वैलो तो रात को खेलता हूँ। तो फिर वैलो का क्या करने का है बताओ? हुआ क्या, ऐसे वाईफाई जो था ना मेरा, हाँ वो बंद पड़ गया पता नहीं कुछ, तो 6 महीना मैं रुका रहा, रिपेयर नहीं किया। तो बताओ अब क्या करना है बताओ। कि भी एमो खत्म। तुम बताओ भाई मैच का। प्राइवेट कॉल में आना। हेलो हाँ हाँ हाँ। प्राइवेट कॉल में आना। प्राइवेट कॉल में मतलब? अबे प्राइवेट कॉल है भाई साहब। अरे सुना मतलब बात समझ नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? प्राइवेट रूम बुला रहा हूँ तुम्हें, प्राइवेट रूम। प्राइवेट कॉल। अरे रूम नहीं, मैं नहीं, स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। यूट्यूब पे। हाँ सब्सक्राइब्ड है भाई तुम्हारे चैनल। अरे वो कौन सा था वो दिल्ली वाला सीन, वो जिसमें वो हाँ लीक ये हो गया बैठा था। है दिल्ली वाला ही बैठा है। अरे दिल्ली वाला कौन सा सीन था जिसमें वो लीक हो गया था, वो प्राइवेट चैट कौन सी थी वो? क्या प्राइवेट से? अरे वो लॉकडाउन में लीक हुआ था कुछ प्राइवेट का, क्या था वो? अरे यार बॉयज हॉस्टल क्या नाम से था वो चैट ए चैट का नाम, भगवान, तुम ये ग्रुप देख का। रहे ये देख रहे हो बैठ के? लॉकर रूम, लॉकर रूम, बॉयज लॉकर रूम वाली चैट। ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे एमओ भी खत्म करा। तुम अच्छा तुम गेम खेल रहे हो? ना बढ़िया मैच चल रहा है। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गया। अरे एमओ स्टार्ट हो गया मैच। आज अरविंद केजरीवाल पकड़े आ गए बच्चे का। अरे गाली कौन दे रहा है? गाली नहीं भाई। इन लोगों तो अर्ली रोटेशन कर दिया इन लोगों तो। हेलो ब्रो, क्या हाल चाल? अरे वीसी में बैठा हूँ भाई। वो कर्तव्य होता है चैट का रिप्लाई देना, तुम बीसी में बैठो या ना बैठो। करण ने काट दिया बे, दवाई को काट दिया करण ने। यार मैं इस वक्त वो मैच नहीं देख सकता, तुम एक्साइटिंग न्यूज़ बता रहे हो। I think one went from for a right click and one left, right? Let me see. Do you guys actually believe these people care? The way they play, no, but they do. तो Valorant quit कर दिया Like तुमने? it doesn't look like नहीं। it, but that's how they play. खेलते हो कब खेलते हो? ये पाल वर्ल्ड खत्म करके तो वही गेम बचेगा। I actually think he waved it every round last game, like just every round. और ये होने ही वाला है बस। रात को तो ऐसे खेलता ही हूँ मैं वैलो डेली। नहीं तुम मुझे वो वाला अकाउंट दिला मतलब 6 महीना हो गया। उस टाइम पे तो खेलता नहीं था, लेकिन अभी तो खेलता हूँ।
god. Oh my अबे god. यार I knew Kujan was gonna say तो something. है कोई आईडी जिसमें I स्किन mean, हो bro. Client on Gazebo, it's not bad. देखो है। है, लेकिन So मेरे bad. मेरे नाम की आईडी नहीं है, तो समझ रहे हो ना। They get 2 kills, 3 kills. तुम कब खेलते हो मतलब बताओ तो टाइम के हिसाब से Yeah. 2 बजे के बाद। Skin, the recon. हाँ जी हाँ जी दोपहर हाँ जी हाँ जी। Don't be crazy. दोपहर 2 बजे के बाद They're having 2 so से much कब तक fun. They're having बाजा so much fun. वैसे ठीक नहीं रहता है, मतलब जैसे टाइम मिलता है, 2 बजे से कभी 6 बजे, कभी रात को, कभी शाम को, ऐसा। यार बोलिए 7 सर, महीने बोलिए। रुका अरे है और अब ये हो रहा है हाँ, मैं 7 महीने रुका और अब ये हो रहा है Well, this is where we are going to get the investment. Mitch, you'll be happy. Forsaken is already bringing in an Odin. Listen, he's a wise man. So इधर रेट हो गया। गया Just proving my point, isn't he? You won't expect this off rip if you're Gen.G, and a little bit of danger for भाई texture. मार The ले crosshairs तो lining यार। up on his head, and it's done some damage, some serious damage by the looks of it. Down to 77. नहीं Texture's मार पाएगा। tag lucky is dropped. And we can continue on with the spams. Heals. but क्या बॉस फाइट है क्या मारो फिर उसको एमो खत्म हो गए, जितने थे सब मार दिए। They're in a pretty good position. A close range spot by Karen. कमांड पैल समन पैल प्रो पैल स्पीयर No, in fact, it's just a double swing and the same thing there. Exactly. Clean तो कुछ trade. करो भैया मिली विली होगा कुछ Looks like it's just going to be fight after fight. अभी उसके अटैक डॉच ही कर सकता हूँ, 1 मिनट में उसको मारना है। Individual brilliance as well. डॉट I think a little bit नाइस too मैन। predictable on when he'd make his move. Munchkin on the other side of the map, and तो अभी क्या करना है the भैया thing is, he could just hold this through to the next round, but I don't कुछ नहीं, expect him पोकेमोन to. मार रहा है, There's बस an मुझे डॉच opportunity कराना है। to अरे नहीं भैया वैलोरेंट का क्या करना है maybe take a gun. वैलोरेंट का तो अभी थोड़ा तो है सीन। Oh, indeed. I mean, not a position you're going to be तो ये clearing. तुम कुछ एडजस्ट नहीं कर Done सकते well to start. Player close is low. क्योंकि अभी वही एकमात्र बचा है मेरे पास। Shields out with a bit of dent. CS2 वगैरह No shields and no head anymore. क्या? This is getting very costly. CS2 for the attacking side. हाँ, CS2 क्या? Not stopping anytime soon. खेला He's already picked up 3. खेला, Now he's बकवास cranking लगा, the pace बंद to कर the दिया, side. अनइंस्टॉल। Time is so desperately पास low. नहीं This भाई, doesn't know where डिफिकल्ट Device बोलते हैं is. इसको। Bit of a surprise. डिफिकल्ट नहीं है वो, भाई डिफिकल्ट मतलब मैकेनिक्स पहले वैलोरेंट से डिफिकल्ट है ब्रो। अरे वैलोरेंट नहीं से मैकेनिक्स और इंडिविजुअल टैक्टिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है। यस ना वो तो देखो, CSGO के ऊपर गेम हो ही नहीं सकता, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन हाँ, CSGO 2 में जो हाइप लाए थे ना ये लोग, तो ऐसी कोई हाइप नहीं रहा। CSGO जैसा था वही गेम को, थोड़ा वही ग्राफिक्स को गेम थोड़ा है। कुछ हाँ कुछ वही है सीन ना, है। जब हाँ 1.6 था वही CSGO बना। CSGO जो हाँ था हाँ वो CS2 बना। हाँ, वही नहीं तो है वही ला दिया बस, वही वही है चीज वही ला है दिया। भाई, हम लोगों ग्रेनेड को पता था ये चीज। ग्रेनेड ग्रेनेड नहीं फेंक नहीं, कर उन्होंने बोला था और भी बहुत सारी चीज, लेकिन वो चीज हुआ नहीं। है ना। देख मैं CS है ना प्रोफेशनल भी खेला है मैंने, ठीक है पता। 1.2 से खेल रहा हूँ मैं प्रोफेशनल CS। पता है, मैं खुद नहीं खेल रहा हूँ उधर 2 साल से। नहीं पता कौन सी साल से खेल रहे हो आप? हाँ क्या बोल रहे हो? कौन सी साल से खेल रहे हो CSGO? मैं CS को नहीं बोलूँगा, CS से 2009 से खेल रहा हूँ। देखो भाई मैं CS अच्छा अच्छा, वो पुरानी वर्जन। नहीं पूरा CS सीरीज ही खेला हूँ पूरा मैंने। अरे मैं समझ गया। हाँ पूरा CS सीरीज खेला हूँ प्रोफेशनली। मैं भी खेला हूँ। मैंने CS को देख, मैं ईयर बताऊंगा 2015 से चालू किया था मैंने। हाँ मैं खेलना तो 2012 से रिलीज से ही खेल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ये होता है ना, जो सेमी प्रो स्टार्ट किया था मैंने 2015 में। अच्छा ये ना भाई लोग मार्जिल गिरजिल कप्पा इनके अपोनेंट वगैरह खेला हूँ मैं। चल रहे बहुत अच्छी बात है ना। हाँ उनके सामने भी खेला हूँ, एंटिटी के सामने खेला हूँ, और AB टीम तो पता होगा ना आपको, ब्रूटलिटी करके।
Odin being kept और through CS में Lakia टीम द ब्रूटैलिटी going करके way up in my तब estimations, let me tell you, buddy. And the उनके Spans, सामने भी खेला well, हूँ they're not having too much success. फैन चार में 1-2 क्लेड in लिया। this round, PaperX have basically nothing to हाँ play एक with. सेकंड एक 4 सेकंड sheriffs. Well, also Sometimes they've, we're the most क्या they've dangerous. already taken the control. That's the कुछ main वो एडजस्ट thing. You've नहीं हो got Karen सकता क्या? aggressively up. अभी It's तो allowed for a नहीं gamble हो rotation, सकता so he's just moving कुछ out कर दो looking भैया। elsewhere. Not the most common door to spam because नहीं you साथ are क्या open to a रहने का couple of angles, पेशेंस but मेरा पूरा it won't वेस्ट। matter. And this is the thing. We've बीच seen में जब this छोड़ दिया था तब कोई नहीं आया। scenario many a time. Find a kill, TP back. Karen is excellent at और knowing when to गेम reposition as well, so ब्रांडेड है अभी पे गेम they CS can अभी leave तो those. एक सोलो क्या क्यों तो CS? प्लेबल ही नहीं है। हाँ पर CS प्लेबल ही नहीं है, सोलो क्यों करेगा तो बहुत मुश्किल है। Well, that was risky. If they came through that wall, Tom, I'm not मुझे sure that would have went the way he was एक्सपीरियंस thinking. करना है भाई Drake good स्किनों for का, और मैं Munchkins, and now finding a परमानेंटली way to थोड़ी fight मांग in, रहा and हूँ। wow, that's a lot of माय damage. आज 2 गॉड वीक्स क्या के लिए Chance बस। for PaperX here. Of course, we did mention they have अरे मैं those समझ रहा हूँ lethal लेकिन मेरे weapons. They पास अभी don't have a दूसरा lot to ऑल्ट play कोई with. नहीं है ना। They'll get nothing done. A flawless round. I hate to harp on the economy, but Gen.G off to a flying start with it yet again. It's feeling यार reminiscent of last map, but it उसकी is जगह still मैं है very क्या early कोई days. तुम्हारे Plenty of जान time पहचान for का PaperX to दे find their सकता है footing. वो They don't खेलने want के to लिए waste अकाउंट? time throwing rounds away. They've called a timeout. That's the funny thing. We might actually get to the कौन है? point where we कोई can नहीं just है highlight when ऐसा। Gen.G don't have money. Yep. We'll just say, GOG और रजत के पास है पर वो मदद करते थे। That's the play. just had it, they've had हैं? it the whole time throughout the series. कुछ नहीं भाई आप I हैं? लोग like the pause आर move भाई के coming out पास from स्किन PaperX वाले because this अकाउंट? has been rough. किसने बोला मेरे पास है And स्किन even वाला looking अकाउंट? back versus यार भाई ये गलत बात है। झूठ हमें भी झूठ मौका एक दो। नंबर all का of that झूठ। was a bit of a peculiar composition, but I don't know if this one's looking any better for them right now. Also, it has a lot of reliance again on this double duelist, and there was a moment or two at the beginning where I was like, okay, something looks like he's here to play. But ever since then, they're just getting boomed, and everyone on the other side for Gen.G has looked हाँ ना आर भाई के पास थे, आर भाई के This स्पेस round at थे। least, हाँ याद आया। Brainstorm, Showstopper, the only ult that isn't going to be बीच में playing a part in this रिवर round रिवर लेके आए थे। for either side. And Munchkin already having that vibe ब्रो Gen.G टॉप खेल रहा है। Gen.G एकदम टॉप खेल रहा है। अभी भी बोल नहीं सकते ना, अभी तो एक साल चल रहा है, हो भी सकता है, ऐसा ये नहीं है। That third map out, you know, officials तो are अभी in a दे different सकते हो क्या? ballgame to खेलने के लिए? talking about regional अभी play, थोड़ी देर। especially against a team you've already played on that map. You're testing so many deeper things. नहीं नहीं अभी नहीं हो सकता वो। Bombing out. अरे Obviously, अभी the uppers, थोड़ी देर it के wouldn't speak लिए। well for what's to be seen नहीं हो because सकता, Lion अभी नहीं हो Sentinels, they're सकता। not going to be any easier. Yeah, no. I wouldn't want to face off against either of those teams right now. अरे Here we पंछी go. वाला लाना चाहिए Again, था। early paranoia. I think this चलो one is ऐड not फ्रेंड really कर going to लो, be played देखते हैं upon. बाद में। I like the idea again, हाँ हाँ। using that haunt to get them space, but something, I think he's just going to disrespect the utility. Had enough of these pushes coming through. He is going to get pinged up. They know where he is, and Texture's already there to support. That's it. They're trying to punish the Odin. They know that it's not easy एक to सेकंड fight देना from मैं this आया। angle, especially when the door gets opened, and now he's dead. But that's what it's all about on Gen.G. ओ Filling in the दवाई spaces क्या and खेला being able लोगों to fight ने। afterwards. But with the हार जाएगी, return मुझे from लग रहा है कि हार PRX, जाएगी। they've got a real chance. The headshot angle held by Mindfreak. गंदा खेल रही है यार, Gen.G गंदा खेल रही है। Playing the limbo, and he's नहीं winning रे, this game with Mindfreak down. It's 45 HP and a निकाल दिया turn उसने। into a nightmare. PaperX losing out on another. They had a good pacey take, managed to put आज the Gen.G players on the गंदा back खेल foot, रहा है भाई, and filled in आज every चेक खेल gap रहा that है। Gen.G were trying to stuff their way into. They always had someone to take that second fight. PaperX had someone to take the third. This time though, they lose out when it comes to the post plan. I gotta say, they really could have used that round. Yeah, this is one of those things as well where Meteor's in a 2v2 scenario. The amount of times I feel like I've watched him just get both kills and his teammates. Meteor अच्छा खेल रहा है Like टॉप he's मैच। just so confident at this stage in his individual ability, and even just ducking under where he assumed his opponent would be holding. That was again another big round for PaperX. A lot invested, even having some decent early trades, but it isn't to be. And now, well, Bladestorm is really all we could talk about, and they're so ready for his initial play. Almost goes down, but has managed to dodge that singular bullet fired by Texture. Yeah, the thing is that's sending them elsewhere. Forsaken was trying to claim some space by sneaking through. We saw good success for that. I think when Yet on the previous map was throwing out a few of those feelers. But the idea now is you can't play up against that op. This ain't the round for it. Your Bladestorm's already gone, and everyone else has pistols. Close range, numbers advantage is the way to go, and they've done it. At least trading out the first.
Karen, though, he has been consistent every single time they've challenged him. This guy's coming up with multiple. 7-2 right now. Teammate ready to swing, and luckily, because Karen was dropped very quickly, so too is Meteor. Now it's winnable for Divine, but his knife was pulled out. Tried to evade some spams or some players emerging from the smoke. Unfortunately, he jumped right into their crosshair. 6-1 for Gen.G, and 4 ultimates online coming into round number 8. It's one of those scenarios where, again, PRX have made some of these rounds look somewhat competitive, but Gen.G are consistently able to clutch out the late round. Again, as you said, ults are in their favor, finances are in their favor. Rosim guy, did you get permission to stream this? No. ये चैंपियन थोड़ी ना है ब्रो ये वाला. Here's a very quiet start to this game, and a reaction shot from Texture already puts down Munya. You see the idea as well? We see the aggression, we try to take space elsewhere. Denied on A, because Gen.G are getting aggressive, giving PRX a taste of their own defensive medicine. This is a really good start with 4 ultimates to fall back on, 3 of which... नहीं ब्रो नहीं, वो चैंपियन वाला परमिशन नहीं रहता है, तो ये वाला कोई भी कर सकता है, ये वाला. If they can even drop a body. And they cannot. A wallbang kill with the Odin from Lakia. That's something dropped. That's the op down. And he's looking for a little bit more. I don't know where they're going to take this on the attack, but I think I know what the result will be regardless. Forsaken's been quiet as well, and reposition. Nice shot at least. Will make things a little bit more interesting. कहीं लिखे हैं क्या रूल्स हर बार का ना ये वाला रूल्स तो क्या जो ये वाला स्ट्रीम कर रहा है ना मैं, ये वाला वीसीटी का ये वाला ना, इस पे कोई पूछ रहा है स्ट्राइक नहीं आएगा क्या, परमिशन है क्या, रूल्स ऐसा कुछ नहीं. मैं बोला वो चैंपियन वाला ही है ना, सिर्फ वो स्ट्रीम नहीं कर सकते किधर पे. क्या कह रहे हो? ये वीसीटी वाला स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ. हाँ हाँ, तुम उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये वाला वो चैंपियन वाला नहीं कर सकते हो स्ट्रीम, लेकिन फिर नहीं कर सकते हैं. तुम वो कर सकते हो, वॉच पार्टी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीसीटी है ये. अगर तुम्हारा वो पर्सनल वो चलता पर्सनल टूर्नामेंट, तुम जाके किसी और को दिखा रहे हो, फिर वो दिक्कत होती है. नहीं तुम कर सकते हो. नहीं वो चैंपियन वाला आता ना एक, कौन स्ट्रीमर स्ट्रीम कर सकते हो, वो वाला एक उनका आता ना एक. नहीं सारे कर सकते हैं, सारे कर सकते. ओह, मैं सोचा था चैंपियन वाला नहीं कर सकते. नहीं सब कर सकते हैं. मैंने कोई स्ट्रीमर से सुना था, वो लोग जो है ना परमिशन है ना स्ट्रीम करने के लिए, वो वाला कोई जो लोग ने जो छोड़ा ना लिस्ट, वही लोग कर सकते हैं, वैसे बोलते हैं जो किसी ने. सारे कर सकते हैं. लेकिन वो टाइटल में ये लगाना जरूरी है ना, वॉच पार्टी लगाना. क्या जो टाइटल में वॉच पार्टी लगाना जरूरी है ना. वॉच पार्टी तो लिखोगे, ये थोड़ी है कि ऐसे तुम चला दोगे. क्या वो तो होता ही. अरे नहीं, वो वीसीटी का वॉच पार्टी के लिए मत लगाओ. नहीं ठीक है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. का ना देख लो. हाँ पक्का है, कोई दिक्कत नहीं. हाँ पक्का मेरे को पता है, वो चैंपियन वाला पता नहीं था उसमें. कोई भी मैच का ना देखने से नहीं मैं बताता हूँ, ये नहीं होता है वो देखने से, कुछ नहीं होता, मुझे पता है. वो कुछ नहीं होता है वो. बस और कुछ नहीं, तुम ये बस इसके लिए नहीं कर रहे, बस देखने के लिए कर रहे हो, बस वो वॉच पार्टी के लिए कर रहे हो, बस ये टाइटल में लिखना है बस. नहीं तब भी ना जोरदार का आता है, समझ जाओ. अब देख लो तुम्हारी मर्जी. कुछ नहीं आता डागर, क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं आता. देख लो, एक दोस्त का तो आया था, एक स्ट्राइक ऑलरेडी एक का पड़ चुका है, तो मैंने इसीलिए गाने के होगा अपने में से. अरे वो गाने का म्यूजिक का होता है वो वाला. अरे म्यूजिक का नहीं, मैच देखते ही सीधा उसको स्ट्राइक आया उड़ते हुए. ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी करी है वॉच पार्टी तो. पता नहीं, लेकिन नहीं अरे वो कुछ और पंगा होगा, वो कुछ और होगा, वो ऐसे नहीं आती. उसने वैसे बीएलटी का नहीं था वो, किसका था? किसी और का होगा वो. वैसे होता है, ऐसे कुछ नहीं करते वो. वैलोरेंट भाई पूरी दुनिया खेलती है, कोई उसमें नहीं. भाई मेरे को लग रहा है ये PRX हारने वाला है यार, मेरे को लग रहा है. हो सकता है, देख लो. 8-1 चल रहा है भाई, स्कोर है 8-1. फुल फॉर्म में लग रहा है. तो इसी के लिए नहीं देख रहा हूँ, नहीं तो मैं ऑन स्ट्रीम ही देखता बैठ के. मैं भी
अच्छा definitely पिक is क्या looking like जरूरत a golf in class, which again, considering this is the #1 and #2 from the same region, though we've already seen them play a best of 5 series, it was a 3-1, and a lot of the maps were close. It looks like Gen.G have leveled up, and for PRX, आप शौकीन भाई को they've जानते हो fallen off, because that's looking like the difference between आर these भाई two is किसको not जानते the हो? same we've seen शौकीन before. शौकीन All 5 शौकीन, हाँ ultimates, by the way, ललित Gen.G शौकीन। don't need them. क्या That's actually the point कौन we're सा in. They शौकीन? don't need the शौकीन ults, भाई they're just winning the हाँ rounds हाँ anyway. समझ गया आगे। You'd be thinking at हाँ this point, उन्हीं को let's स्ट्राइक just पड़ा throw था one अरे out वो just कुछ to और see. पंगा, वो कुछ और Alright, चक्कर में okay. स्ट्राइक पड़ी होगी, ऐसे Cycle नहीं the बढ़ती economy a little स्ट्राइक। bit. Here comes the big rocket, and it's not landed. It's not found the value it needed to. The lockdown has been destroyed, and Meteor was वो भी tagged down. 10 quite a bit. मिनट मैच देखे That's the 10-15 value, मिनट right? बस That's the सीधा आया value. They got rid of the show. They got rid of the lockdown. देखो ऑलरेडी नहीं उसी वीडियो से आया था उन्होंने बताया था He's screwed. There's no way he survives that. लेकिन हाँ एक चीज उनका सब्सक्राइबर गोल कंप्लीट हो गया था They haven't planted the spike, but they don't need to. If they win these fights again and again, and they have. Lakia dropped, leaves Munchkin 1v3. तो If he wins this, मुझसे वापस गया I'm मैं putting the headset down. They've got decent amount of HP, and they've lost Mind Freak. Okay, but अलग it's अलग रहा है all भाई right. इनका भी। They've still got 2 players, no utility to play with. They've got to just take these fights, not one at a time. That's the only thing I beg of you. Not one at a time, not up against Munchkin right now. He's 11-4. He's been winning round after round, but a reposition by Forsaken. The swing is good. And the double peak wins the day, 8-2. Deja vu for PRX. And, well, Gen.G got to be feeling confident. The good thing is they used 3 ultimates there. Yeah, that's what I mean. That they lose the rounds, they use the ults. That's the weird thing about it. And again, a lot of this just came down to some brilliant individual play from Something, finally putting a couple of kills on the board. The fact is they did peak Munchkin individually. First player peaks, dies, second gets dinked, and it's only finally they reposition. I think we would have needed a new desk completely for Alex if they managed to lose that round, but it's scary that it even got close. I think just get rid of the desk, man. Punch it bag with an LED screen in it. Whose face is on it? It depends on the game. Make it interchangeable. Well, Forsaken's picked off Karen. That's a fantastic kill. Look how open the A side is. And they've made that realization. There's no further challenge. There's no utility. There's no reaction from Gen.G. So Forsaken realizes it's wide open and he gets caught by Lakia. That timing was near perfect. You have to, well, I mean, you could call it a mistake. At the end of the day, he was open to like 6 angles, so he has to just be clearing those, constantly being paranoid about them. The site, though, is lost, and PRX will find the plant nonetheless. Showstopper online, not wanting to allow them to set up. Something's going to try and get aggressive, but he's not going to manage to land the shot. Now, I think the flash through the back might have actually caught Munchkin, so he's going to actually reposition through B instead. Move away from the flank position. आ रहे I हैं। think it's because Device हो haven't गया? too many angles. The फोन आ Seekers गया at least will give it away. ना कुछ कोई गेस्ट आया है, मामा लोग हैं। करो बात करो बात करो। He might get caught by all of the Seekers, but his teammates got his back, and that means यार he'll be थैंक able यू to सो kill मच off सब्सक्राइब Bye. करने के लिए लेकिन many नाम तो players. बता A bit दो of an obscure वॉकिंग करते position. करते मारा One गया yet has not been cleared yet, and because of that, he's going to be able to deny the defusal. The spam doing so much damage, and now it's all on to Defy with an operator. First shot missed, but he just needs to kill the guy defusing, and he's done enough. There's no time left. Finally, PRX pull out the miracle rounds we've seen from them, but everybody will go down with the ship. Well, it's the same thing as what we saw before, Tom, ना right? They're getting this little पलट गया ये resurgence towards the end of the half. This time, PRX didn't have the pistol to अरे भाई help कुछ them बोल out. They रहा है were ये both on the previous map, putting them up 4 rounds, and they ended on 8. But here, they're वो आ doing it रहा on the है rifle rounds. They're doing it in the clutches अरे as भाई well. As close as they may come, it's still giving them that अरे little भाई bit of a heartbeat अरे भाई खो गए to continue on forward. Now, हेलो आर this भाई आवाज आ round, रही है the last of the half, हाँ हाँ बोलो बोलो। Gen.G come in with a Viper's कहाँ Pit. खो गए That's going to be a problem to क्या? fight through on the defensive कहाँ खो side, गए or अरे potentially वो a very मूवी strong देख रहा हूँ tool for बोलो। retakes. ये ना कुछ मुझे बोल रही है Scary when क्या it's बोल रही है a बताओ। Red Bull clutch that ऑन gives स्ट्रीम you नहीं a बोल third सकता round, but ऑन स्ट्रीम नहीं बोल सकता तो व्हाट्सएप कर दो या as डीएम long कर as they're दो कुछ getting भी the करो। rounds, I don't think they're going to mind too much. This battle is now changed. वही It was वही previously Karam वही being क्या? solo, and now it's Texture, and his operator. कोड who's पे been बोल रही है fierce. समझ जाओ क्या कोड दे रहा क्या बोल अरे यार है ये अरे मैं इतनी नहीं हूँ फोन पे तुमसे अरे बात कर रही हो अकेले। Is there a flash? Is there anything? अरे No. मुझे भी पता है No, वो it's लेकिन just a dry वो wide नहीं peek by Monyet. Players क्या? up top looking to trade, but कोड दे रहा Texture's है out मेरे of the पे angle too quickly. कौन सा कोड? PRX have
Giving him another अरे shot. ये भगवान It looks अरुण like भाई another bite of this apple. As around comes another, but finally the miss is there. Texture gets the reset though with low HP. He's dancing क्या कह around, रहे हो? but he's कुछ being समझ नहीं आ caught. रहा क्या बोल रहे हो? There's व्हाट्सएप no कर दो क्या escape कह रहे हो? this time, and with Lakia falling, a real chance emerging for an 8-4 half. It looks like PRX have finally woken up. They've found some punch to be packed. Let's see. Meteor's on his way in. Up close with a teammate further away. Munchkin's making a lot of noise. They're trying to find an angle to deal with him, and instead running into Meteor. Well played. Now they can group up and try to force this 2v2 with the Viper's Pit. That was a little scary. Thought Munchkin was about to be spammed, but now they've got a lot of space as they close in the distance. No snake bites to play with, though. That could help out, keep them way out of this pit, and with Munchkin falling, it's done. PRX 8-4 at the halftime. They found some legs to stand on, some foundations laid. But the second half will be tough if they lose the pistol. ठीक है भाई, It ठीक है, almost ठीक है, identical to what we saw in the ठीक है। last half. A streak of rounds. That's just तभी तो आपको बोला disgusting. मैंने। I was thinking from Forsaken's point of view, I was like, I didn't even really see anything. That's how good Texture has been. But again, it's those player deficits that are actually what turn the tides over there. Well done from PRX to at least get something. अरे भाई क्या लगता है? ए भाई क्या है? हेलो अब कौन जीतेगा? अरे ओ जी चल क्या रहा भाई? आपका माइक तो पूरा ये कर रहा है। हिट कर रहा है आपका माइक बहुत ज्यादा। way behind them. Yeah, I think we were taking too easy. I think. I mean, they did exactly what we. ओ अरे हेलो हेलो आरर भाई। अरे फिर चले गए आरर भाई। डिस्कॉर्ड पे है क्या? आरर भाई आवाज आ रही है? हाँ बोलो बोलो बोलो। आप पे भड़क गई है। मेरे पे क्यों भड़की भाई? अब मुझे नहीं पता, आप संभालो। मेरे को लो कॉन्वॉय पे बात करता हूँ। मेरे को लो कॉन्वॉय में लो बात करता हूँ। क्या हो गया? कॉन्फ्रेंस पे लो बात करता हूँ। कह रहा है आपसे बात नहीं करेगा। क्या? आपसे नहीं बात करेगा। झूठी एक नंबर की कॉल काट दिया इसने। रुको मैं फोन करता हूँ। किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे एक ही तो है। अच्छा वो किसके बारे में बात कर रहे हो क्या? कोड चैट हो रहा है क्या वो? नहीं नहीं तो बात हो रही। हेलो हाँ क्या बोल रही है डाक भाई को मेरे बारे में? हेलो ठीक है। हेलो ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? मैं अंधा हो चुका हूँ। GEN.G looking like a competitor for the crown, and thus far we haven't seen the PRX that we know and love. भाई ये क्या लॉजिक round might just be a deciding factor, but Yeah. great start from Monya. Already pushing. ओ डाक भाई On the other side is झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या? कि वो ऐसे बोल रही है? बोला झूठ बोल रहे हो? कह रही है तुम झूठ बोल रहे हो? The rest of the team somewhat far away, an opportunity. मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला। हाँ देख ले बोल रहे कह रहे बोला Keeping the numbers in their favor, something needs to do a little bit देख more. लो झूठ बोल रहे हो कह रहे Some नहीं damage, बोला and there's the follow-up. क्या? A shot right to Texture's temple. That's going to put us in a 4v2 with PRX. Definitely favored to take this pistol now. Forsaken fallen. A little bit more of a chance. Something though delivers. Okay, he's up top. मेरे से? आइए That's a 3K for something. अब मैंने क्या करा? अब पता नहीं क्या करा तुमने। अब क्या फोन पे हो क्या? चैट पे बात चल रही है? नहीं मैंने कॉल काट दिया। क्या है आर भाई फोन कर रहे हैं? ठीक है तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं फोन काट रहा हूँ। हेलो ये भी स्कैम है। हेलो गेम अटक गया मेरा। ए भगवान देख तो नहीं चलता। क्या सो रही है क्या? हाँ लग रहा है। Mostly in Pacific, Hello. much more consistent on their attack.
हेलो was essential for PaperX. अबे बहरी हो गई है क्या? हेलो Very little to play with for Gen.G, and even if they drop something, he's the player मुझे who's आरआर working भाई with पे the तो pistol. भारी लग रहा है, कुछ भारी होने वाला है आरआर भाई पे। Reached here. Any further kills will अरे will force some level अरे of अरे investment चला on के the रख side दिया of इसने। PaperX. But on the defense, they can keep distance. यार क्या And with बोल the रही buy है that समझ Gen.G नहीं आ have, रहा। they're definitely not favored on ranged fights. Defiant will be solo, but you can see the rotation already coming out from Munya. अच्छा तो क्या कर रही है? इतनी धीरे क्यों बोल रही है फिर? Go back in with that Marshall. This is a round that they shouldn't really हेलो have any opportunity to win. The ये तो weaponry लगता है मेरी क्लास नहीं, हेलो not आरआर falling भाई into की the क्लास hands of होने the वाली kills है। they've garnered, and ए the players they're अच्छा pushing चैट में कर into दिया। are actually अरे just going to मम्मी start सो pushing गई। into अच्छा them. ठीक है A ठीक है good ठीक है round ठीक है from तो व्हाट्सएप PRX कर as ले, they व्हाट्सएप पे बात कर managed to ले bring जल्दी। things again back within ठीक है two. मैं फोन काट दूँ? But the fact is, it has हैं? been the buy rounds where Gen.G truly have been हेलो a level above. Well, just look at your screen. Besides something, this is a फोन round काट that often you're दूँ? going to look at as an eco, but 3 orbs away from a blade storm means he can force up here, buy an operator, and potentially have a blade यार storm, फोन even if भी they नहीं lose काट the round. With कॉल how में रमेश लगा। भाई consistent और he रमेश भाई normally क्या is, हालचाल? I would definitely put stock भगवान। in him finding at least the 2 orbs. 1 kill and a death. We'll see what he can get up to. It also means they can gamble the control. वैसे ये रमेश भाई और आप Holding onto इसकी- the आज base side, नए आए हो position ना for स्ट्रीम पे? Munya. This is not really the डाक gun भाई you तुम्हें want भी to कह have रही है here. कॉल पे लेने के Somehow लिए। he gets out of there unscathed. मेरी एक ही They इशू also है, have बस an मैं initial चैट set नहीं of पढ़ players पाऊंगा ना, outside वही C, दिक्कत but है। वही after तो that चक्कर spot पड़ comes रहा through, है। सेकंड मॉनिटर है नहीं ना। fading back. Now the cross बोला has भाई already ले लो, happened. क्या जा रहा है करना? थोड़ी Something देर में now in a फोन pretty करें deadly फिर। position. And ले तो honestly, लेंगे, I think Meteor's पैसे gonna be बस looking आ for जाने bringing चाहिए बस। Well, here's the chance for that operator to finally अरे show. और यार, रमेश भाई क्या वो हालचाल? चैट नहीं पढ़ For the पाएंगे side of फिर। Gen.G as they Oh, lose a nice player shot, right bro. off हेलो rip, and it's Texture, मजा a में आ गया man भाई। with the responsibility to take the space to close the distance. मैं Now कहाँ they'll be से a little पढ़ूं? bit मैं भी तो slower फोन on पे the way बात कर around रहा these हूँ। corners, which is just perfect for something. He had to be बात तो watching the सही right है। way हाँ, though, मैं- and Munchkin caught him unaware. The same happens with रुक एक Divide though, सेकंड। leaving it to a 3v2 defensive advantage, and Divide walkabouts. He's been so good. 19 kills, looking for his 20th and his 3rd of the round. ये It कौन सा looks like he गुफा might. है? Oh, he will get the opportunity, but he's being dropped. Doesn't matter because Munyet's there to catch चैट him when तो he falls. ये 8 to भगवान। 7, and now क्या हो गया? this वो कह रही है तुम तुम पढ़ो। 592 थैंक यू सो मच। वो 8 मैं- सब्सक्राइबर दूर है हम 600 नहीं से। तो वो कह रही है I like तुम the way पढ़ they लेना play as चैट well. उनको फोन। After the initial spot that there was at least फोन one पे player चैट? lurking, they know अरे there's मैं a, पढ़ an लूंगा, opportunity तुम to कह रहे हो potentially तो steal a तुम्हें gun फोन away. पे वो कॉल So पे they लो। 3-man push, even a trade there's not too bad, knowing there's some things on the other side. And even though he only gets one हेलो kill, he does enough to delay and allow मेरा for तो those शैडो भी rotations. क्या? Divide as well though, as you said, he's been और fantastic. चैट तुम 19 पढ़ and लेना 10, है। अरे topping रुक the जा entire मेरी माँ, scoreboard रुक right now. जा। Something once more. They know he's going to be ये क्या here. लो? They know there's a high chance he'll be here, and they're actually going to अरे really put डाक the भाई वो pressure कह on रही है early. तुम्हें कॉल पे लो। I don't mind this from Gen.G. They have डाक players भाई lurking elsewhere. The trap just got वो कह रही broken है on तुम्हें B. कॉल। So now for PaperX, they have to be worried about the flank. It means ओह you're not going to मेरे पे have बढ़ गया। Forsaken there to help with this fight. Instead, something has हाँ to do it on his own, and again he finds एक सेकंड Texture. रुको। That's a ओह big part डाक of this भाई take. They try Oh. to seize the space within, एक सेकंड रुको। blast packing in, एक but सेकंड एक instead सेकंड they've been left to try and आया। trade it out. 2 versus आ गया। 3. Meteor's good position उठा। has been noted. As we said earlier, they नहीं know नहीं that एक सेकंड trap में was आया। broken. They know there could be someone around here. It's why you see आह, Divide wait यार for मेरा भी Mindful. सिर दर्द कर रहा है, जल्दी Allow जाके it to come सोऊंगा through यार। while Munyet finishes this flank. Looks like they're aware. अरे डाक Divide, भैया they're कॉल क्यों very काट much रहे हो? aware that something is going on. I mean, एक सेकंड PaperX रुको, haven't एक made a सेकंड रुको, move. आया आया। Why haven't they? नहीं Why कॉल are क्यों they not काट रहे हो trying to डाक भाई? fight हेलो for any bit of अरे control? एक सेकंड रुको ना, आया। And that's not something they'll find an answer आया to until आया। they plant the spike. It looks like because they've spotted players near B and they're worried about their spawn, they're actually going to go fighting aggressively. This could be a big win if it comes through. I'll never Nice play work from that. Meteor. One अरे वो bullet left. स्ट्रीम कर रहे हैं मेरी। And nothing being spotted towards the spawn. अच्छा This डाक means भाई they know where they अच्छा are. डाक अरे डाक भाई तुम्हें कुछ मैसेज आया? With the pistol, he नहीं does it alone. Meteor's gonna ओ confirm डाक the भाई master नहीं आया नहीं आया नहीं आया। of what was अरे looking एक like a मैसेज round. आया या स्टोरी Firmly देखी in the इसकी hands of स्टोरी? PaperX. Falls to nowhere. नहीं अरे इंस्टा की
की स्टोरी उसकी उसकी नहीं इंस्टा नहीं की नहीं स्टोरी नहीं देखी क्या? नहीं नहीं, इंस्टा यूज ही नहीं करता मैं उतना। ए वो तो जब फ्री टाइम बैठता हूँ तो तब देखता हूँ बस।
he knows he'll hit the shot. For some reason, when it's him, a 2v2, and he goes, okay, I've got the first one, बोलो he बोलो always बोलो peeks for the second. चलो बॉक्स वही खोल वाली ना लिए। वही Always वाली gets it. That's the thing. हाँ बॉक्स खोल Every लिया। time I'm sat ये there क्या going, मिला? ready to अटैक critique, पॉइंट। and then he gets the kill, and I'm like, अरे मर गया। well, बच गया। fine then. I guess that was the right play. Well, uncouth, मार but मेरे it works पोकेमॉन। this time. Certainly caught his opponents off guard with Gen.G 9 to बॉस 7. फाइट के बीच में हूँ ना, Claiming that round. समझो। PRX have weaknesses. An अभी operator आया। in the hand of something. ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जेएनजी क्या खेल रही है यार? मजा आ रहा है भाई। Oh, nice flash. That's good. स्ट्रीम में नहीं आते कॉल उठा लो डाक भाई कॉल उठा लो Munchkin's been given a second chance at life on the showstopper. एक सेकंड ओ दो। डाक Oh, भाई not just used for space, but if he fires it हेलो up close, no. हाँ हाँ एक सेकंड दो। And now he realizes his mistake as the dive comes in from PRX. जोजी भाई एक मैच खेलोगे To work with. नहीं खेलूंगा। अरे Forced him to back, but it hasn't happened at all. They went aggressive. वैसे 2v3 निकालेंगे क्या अभी ये? Spike already planted at least. They're बैगन gonna have to respect it and just fall back. क्या एमो लाना भूल गया Still था। holding, and they have a pretty nasty. कोई ना तलवार से मारूंगा। The amount of ये ले time that can be, but ये ले। Munchkin is just looking at that clock. आगे That's all he आगे अरे अरे मेरे पे आ गया। वो है ना आसमान में गए थे वो निकाल दिया बे। कि चांद कैसा दिखता है आसमान से तो वो फिर नीचे फिर गए फिर से वो आ गए दोबारा कौन? जोजी भाई की बात चल रही in this second half. अच्छा अच्छा। And they close the gap once again to just one round. आसमान देखने गए थे। Well, that's a हाँ response आसमान and देखने गए resurgence थे we वो wanted नीचे to see फिर आ गए दोबारा this game, this match. And indeed, this series Would is have hanging killed on a knife's something if edge. he just shot the bullet. That's got to be so infuriating. Yeah, I can understand he doesn't want to give away his position, but, you know, you make a decision there. Do you gamble it? Do you not? And, well, he chose wrong. Chips on the wrong Well, call. last night, Well, again, 9 to yeah. 8. क्या कह रहे हो And for PRX, ये वाली it जो looks नाइफ like आई they've मस्त है। really got their hands dug into those reins. The economy is low. We've seen Gen.G win low by rounds. अब लैग हो रहा There's a Viper's pit online with 1 kill from Munchkin, 1 करना orb, 1 पड़ेगा। plant. But the main thing is something has got basically an मेरी जोजी भाई मेरी जोजी भाभी हो गई भाई दो मारा गए जोजी दो मारा। भाभी जोजी भाभी गलत मारा। अब वो तुम जाना और वो जाने क्यूटिकल मेरे को क्या मेरे को तो मैसेज आ रहा They है have somehow made this comeback happen. 5-1 in this second half after what was basically, we were at a scoreline where this looked over. What was it, 8-1? And then they went 3 rounds in a row. And that's the thing. You don't really think it at the time because an 8-4 half is still great, but it seemed like Gen.G just let the foot off the gas. A few big plays coming एक तो out. कोई नीचे जाएगा तभी पकड़ूंगा। Now we're starting to see players rise up. You were mentioning it, the distance between Devi and everybody else was a lot. Well, something has been closing the gap. I'm also just looking at Mind Freak. Yeah, looks like they're looking at him too. Karen was trained in on that with Texture finding a field day. 2 HP left on Devi. He'll find it hard to get any impact from this point. A stray bullet enough to take him down, but he's caught Karen off guard. The flash covers his retreat. No more flashes, and they don't regen anymore. An opportunity still. No, shut down. 2 versus 3 though. Viper's pick could change the game. They're trying to get in as quickly as humanly possible, but Meteor's there to defend. Leaves it onto something. As said, he's had a real resurgence. They just fall back to enable the reload. Never mind, he's just looking to reposition completely. I think they know exactly where he is, but somehow he still wins the battle. 3 bullets left in the clip, the pit's been dropped. He's already going to spot one, but he's now just out to the Classic, and it's a Classic v Classic. Malaki is the one to take it home. These rounds are getting insanely close. And it's a back and forth once again. Really is like a pendulum क्या swinging. ये बात There's no stability अरे to be बोल found तो for दी either of these teams. 2 बोल rounds दी for मैंने PRX. नहीं बोला नहीं बोला Immediate answer back मैंने सुना by Gen.G, but the fact that it comes down to this, that the Viper is dropped outside the pit, and that's the result. Clean as can be with a final right click to close it. Gen.G, they've got a lot set up in front of them, Tom. There's a इतना very खाएगा बे showstopper for Mun yet. Other than that, आजा everybody is just on the rifles. Credits are low. Gen.G could be on the home stretch very, very soon. And Forsaken in that corner needs value. They've not seen him. He's good for 1 and damage on Texture. Those could be very, very
pivotal facts for us as PRX look to move back through. So many players are low. One extremely low in the corner. It's the Rocket to find him. Yeah, that's the thing though, that trade's all right. That was the low HP player What up? that goes down. I don't think they're going to mind that whatsoever to put it back into a 3 versus 3. Something about to try and go through this. His teammates a little bit further behind. No flash available for Device, so it's just going to have to be the raw push. Already managing to retrieve a rifle, but every member falls. Gen.G now get a double back of their own. And the major worry here for PRX, they don't have backup credits. They don't have anything in their pockets other than a Blade Storm. This could be the beginning of the end. It feels that way, Tom. 2-round gap. Gen.G in this series have just Finally been पकड़ लिया when it guys. came to these rifle rounds. Thank And again, you. it seems हाँ, strange love you that too. 13 to 8 ठीक है? to 12 हैं? is a Love you dominant too. game. Yes, हैं? this is a strong देख score. रहे हो आरआर भाई की अलग ही चल रहे हैं Look at both pistols. That's a 4-0 start. एक ही तो है Point जजी भाई। flips. And PRX देख managed to रहे हो just about come ahead. When it came to अरे rifle rounds, they weren't यार able to succeed. बोल That दे कुछ early तेरे push, को नहीं it's पता not quite a बोल rifle. दिया। Instead, it's a set of blades, and those don't even get fired off. They lay by his side as he falls to the Hey, floor. guys, Something down. इधर आरआर भाई बोलते गेम की सेटिंग नहीं मिल रही है There seems to be nothing that PRX can do to surprise this Gen.G roster in the last few rounds. हमें नहीं And मिल with रही है 12 बस looking like it's on the board, Tom. These तुम क्या players, कर रहे हो? तू they have दबे to भी be नहीं मिल feeling रही है वो। the crushing weight of this series. The lower bracket is वो तो beckoning them. दिख रहे Here दिख they'll रहा face है elimination against the ये ऑन Suns. स्ट्रीम अबे रिकॉर्ड भाई, है अरे है भाई क्लिप अरे अच्छा भाई, वो अरे अच्छा नहीं, थैंक नहीं, यू याद नहीं, दिलाने नहीं, के लिए अरे क्लिप नहीं, क्लिप रखना नहीं, पड़ेगा देख में हाँ भाई इंस्टा बहन रिप्ले वाला, ऑन भाई कर बहन लिया वाला। क्लिप कर लिया अरे नहीं भाई बहन वाला लब्यूट ना ना वो तो मैंने नहीं अरे सुना वो मैंने नहीं तो नहीं क्लिप नहीं कर लिया भाई बहन वाला लब्यूट बोला Absolutely nothing. And the second we got into these post है ना वो तो मेरा where क्लिप हो गया अब Gen.G are जब भी looking होगा most मैं तो fearsome. डायरेक्ट सुनाऊंगा A team ये from देखो last पहले year से एक था ये started दूसरा आ गया strong, had a massive fall नहीं from grace, अरे भाई बहन made वाला a लब्यूट huge भाई बहन overhaul वाला of है वो this भाई roster बहन with वाला risks अच्छा taken. Players brought back who had been in a Masters right at the beginning of Valorant, a player they got from अरे ranked, तुम्हें नहीं भेजी ना इसने वो and वाली players फोटो that have not found success क्या elsewhere. Texture, one I think we can really highlight. Dark Like in G, क्या क्या he was okay. तुम्हें नहीं But to भेजी go ना वो into a वाली फोटो Gen.G इसने roster that's now क्या playing for a कौन सी minimum वाली of फोटो top भेजना 3 डार्क भाई if they को win this match. ओए Unheard of, surprising, and now looking like that pinnacle of Pacific. Looking to try and do what no Pacific team has ever done before. यही वाली जो मेरे को भेजी हुई है जो themselves ऑर्डर to a हुआ था आज International कुछ ऑर्डर victory. हुआ था ना वो वाली PRX are not dead. ये खाना वीडियो उसका खाना साथ में नहीं लिखो खाना नहीं खाना नहीं साथ ये में साथ में लिखो भी किसने ऑर्डर किया था Definitely looking in. ये ना गलत होगा खाना नहीं भेजना चाहिए Three फोटो straight में rounds in OT in the third ये round. गलत होगा A lot of win तो conditions. मैं भाई मैं मुझे नहीं पता मुझे भी Gen.G, चाहिए 3 ultimates to fight their way through. PRX don't have reactive ones, not impactful ones. Whereas the lockdown, the showstopper, and of course the nightfall. Any one of those can open sights, pull you out of sticky situations. Door open. That was the defenders, but it's covering Munyet's push forward. Problem is, okay, good nade up close. That's going to force that player out in the open. Problem is, Texture was covering it. And now the push on mid देखना is जरा spotted as जोजी well. डार्क भाई जरा 3 players ग्रुप में left एक for वो PRX. आया वीडियो Looks फोटो like आई है they've still देखना got a जरा fight WhatsApp in them. खाना हुआ ना मुझे भी चाहिए Evaded. He's being पहले caught. देखो तो But, सही oh, it's fake information. The shrouded step is bought a ये little ना bit गलत of an है ये advantage गलत for है Mindfreak. मुझे He's पता था still खाना alive, ही his होगा HP ये recovering, but with something down. And ये Divine गलत है very एक much known तरफा towards that ठीक है spawn. Mindfreak's on the wraparound. Wants to move towards that singular door. For this, Divine needs to इसको buy some देखा time. He still has इसको a कल flash to play बताऊंगा with. मैं There it goes. It's popped and it's cleared out this corridor. Devi's even won the fight. The smoke is down. A chance if Mindfreak can make it to Devi. If they can take this fight together, but they don't know where the last players are. And the nade has even forced them back for a second. The time now very low. And with 2 players still to root out, it might be too low. Devi just dodges that siege, but Mindfreak down. The time now not to be played with. Okay, no, Texture went out swinging. There's no chance. जब There's भेजा no chance whatsoever. He has to एड्रेस भेजूंगा ना उसको and अब मेरे this मेरे घर पे never भी चाहिए swinging the other way. ऑर्डर 13-9.
And 13 अरे of 8, कॉल a करो यार डाक consistent भाई, showing उसको from बोल the रही है side of कॉल पे Gen.G कॉल। as they take victory over their बिल्कुल वो Pacific एक सेंटर हो comrades. गया वो। It's on to the upper final. Yeah, it यार is मैं गलत another रास्ता आ गया। huge statement ओ play for डाक भाई। Gen.G. No हाँ हाँ doubt मैं at कर this रहा हूँ stage बस हो that गया they wear the पूरा crown when it comes to Pacific. फिर भाई यस That's not वॉच the पार्टी crown चल they're रहा है gonna भाई, wear क्या anymore. क्लोज कर They दिया said it at जेनजी the ने, time. मजा आ Their गया। goal was to 2-0 make it to the playoffs. Well, they've made it there and they've continued to push forward in that upper bracket. A team has said that last year didn't really do too much, didn't really give us much to be excited about, and then bringing together a mix of players that maybe क्या many बोल रहे didn't डाक, आ रहे हैं expect to कर do रहे हैं well, फोन कर रहे हैं। definitely didn't कर expect to get रहे this बस हो गया। far. They यहाँ से निकल जाऊँ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्लोज किया था गेम। पूरा अरे यार ठीक है। हाँ ये दोनों फाइटर टीम मूवी अच्छे का है रे बोल इस रहा बार, लेकिन जंजी ने जो स्प्लिट में रीड करके इनको मारा ना भाई, फाइटर उधर ही मूवी हो गया डाउनलोड भाई, कर ले उधर ही हो गया इसको पूरा मैं। फाइटर मूवी फाइटर The second map, हाँ although क्लियर only प्रिंट आ one गया round in the difference, Tom, this was definitely a much कौन better सा? यार feel. मैं एक अरे को मिस रिफ्ट कर रहा हूँ, मैक्सिंग पता है वाला किसको? फाइटर Their way मूवी back रिलीज in. हुआ अरे है। वो तो कब मैं का देख PRX लिया। को मिस क्या मिस तुमने वैसे देखा है ना, ये लोग का क्लियर एक प्रिंट और में नहीं रील बन देखा सकता है। अरे नहीं बुलबा नहीं वो ऐसे नहीं देखा, मैं तो फिर सिनेमा बंद। पे जाके देखा। ऐसे सिनेमा 17K में लाइक 17K देखो लाइक्स देखो किधर हुए? तुम सिनेमा में देखो क्या 17K है पे बोला ना जेनजी आज लग रहा है। सारी मैं तो मेरी स्ट्रीम आप कर जो रहा था, बोलो सब देखा लव नहीं। अरे विघ्नेश सुन भाई। तो रहे हैं और क्या हाँ कर रहे ठीक हैं। है। Positivity is always Be better. the सुन तो biggest रहे हैं यार हो गया हो Let's गया हो figure गया। out who it is. Take some notes. This is a very nice position to कुछ be in. ग्लिच हो गया अच्छा मेरे खेला साथ। लेकिन अच्छा मेरे खेला। को डन अरे डन डन अरे डन। फोन अभी तो रहा हूँ सेंटिनल कर रहे हैं For वो the फोन region. हो गया हो गया हो गया हो गया। खबर कर ले A 2 flash in the मिनट pan a lot of the time. You look at the Zeta run. ये You क्या can हो even गया throw मेरा। the Chinese team of EDG in there as कोई well. ना बाद में चल देखता Keep हूँ। around नहीं अभी Paper X, कर रहे हैं एक maybe अभी सेकंड कर रुकना रहे हैं गाइस। 2 मिनट दे दे बस It उनको feels कर रहे हैं different. वो Individuals on that team एक सेकंड रुको। अच्छा खेला रे कब जेन। अरे वन साइडेड आएगा भाई, रुक वन जा मेरी साइडेड। बात सबर कर ले सबर सबर का फल है ना मीठा होता है मीठा से भी ज्यादा सवेरे का फल होता है। प्लस 1000 बाद आएगा खुद अभी आएगा हाँ अभी अभी 4 लाइक पे 4। अभी करके देंगे कॉल रुको जरा तुम अभी कॉल मजा करके आ गया भाई, देंगे मजा आ गया। मेरे को अभी कल कभी शादी में जाना है जल्दी कॉल कर अच्छा इसका करो रे कॉल कर लो रे उसको टपक जाएगी नहीं तो वो हाँ हाँ हो रहा है। थैंक यू सो मच 5 लाइक करने के लिए। हो रहा है। चलो बाय मैं जा रही क्यों क्या हो गया कहाँ जा रही हेलो 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 लो भाई मेरे से फोन काट दिया हाँ हेलो आज भी कोड नहीं मिलेगा। क्या हेलो हेलो क्या आज भी कोड नहीं मिलेगा? बड़े लोग हैं। हेलो इसका मतलब क्या होता है विराज भाई? डाक भैया भी आज चलो मिलेगा, अरे टेंशन मत डाक लो। भैया बिजी मेरा हो नहीं गया कर खत्म। हो गया देख कर रहे हैं हो गया मैं लेवल अप कर रहा हूँ। कर रहे हैं 19 हो गया अरे आर भाई मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ, साथ में चैट से भी बात कर रहा हूँ। कहाँ बात कर रहे हो बे अरे अलग तो वो उसी को तो फोन लगाया। कहाँ लगाया फोन स्क्रीनशॉट भेजो। मैं बात कर रहा हूँ फोन पे तो हे भगवान मैं भी हूँ। कहाँ हो नहीं हो तुम मुझे नहीं होल्ड तो पे मेरे को डाल आवाज के नहीं आ रखा है जाती उसने। फोन पे मुझे होल्ड पे रखा है उसने। देख होल्ड पे रख ले अब तू उनको शर्म तो आती नहीं होगी तेरे को अब मेरे को कह रही है डाक भैया बिजी हैं आप बड़े लोग हो ना। हैं क्या हो गया विराज भाई? क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? डाक भैया हेलो को कॉल में लिया तो क्या दिए काट दिया नहीं वो होल्ड पे हैं हेलो हाँ देख हेलो हेलो कर रहे हैं वो होल्ड पे कर रखा है तूने उनको कोड नहीं देते बड़े लोग हाँ हैं। है होल्ड पे कर रखा है ए मेरी भगवान होल्ड पे कर रखा है तूने उनको वो हेलो हेलो बोले जा रहे हैं जब मैं से समझा नहीं।
अरे तो मैं पहले गेम तो खत्म कर लूं विराज हे भाई। भगवान, Es que ya habían jugado en contra de composiciones de Cypher, así que el enfoque principal era फिर cómo वो कह tenían रही que है jugar नहीं en रखा contra. होल्ड पे मैंने। ये लो मैं ना स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। मेरे को कहीं कॉल कर रहे हो? अच्छा ये तो उसने डाला है, भेजो तुम स्क्रीनशॉट भेजो जरा। कॉल काट दिया उसने, दोबारा कर। अरे काट रहे थे। हेलो। हाँ अब आ रही है कॉल, अब आ रही है तुम्हारी आवाज। अरे जनजी आप बड़े जनजी बेवकूफ जनजी ओपी हाँ है जी। हाँ हाँ रे जनजी ओपी नहीं करा, बस सही कह बस रहे हो करा डाक लेते भाई, हैं। तुम सही कह रहे हो। एक सेकंड देना, एक सेकंड देना, रुको। हाँ हाँ कोई नहीं, आराम से। कोई कितना टाइप कर रही है, किधर देखो आए आगे पिज्जा वाले। बोलो क्या बोल रहे थे डाक भैया? ओ डाक भाई कहाँ चले गए? हेलो। फिर से मार के गई ये डाक। हाँ, शायद स्ट्रीम एंड कर रहे होंगे। अरे स्ट्रीम एंड कर रहे होंगे, आ रहे हैं थोड़ी देर में। ओके अरे बाय बाय, फिर बाय बाय। बोल तो रहे हैं, आ रहे हैं थोड़ी देर में। जा रहे अच्छा चल सो जा, चल सो जा, चल सो जा, चल सो जा। अच्छा तो थप्पड़ इतने मारूंगा ना, रोने नहीं रोने। आ रहा हूँ। चुप बिल्कुल। अगली जब कह रहे हैं आ रहे हैं, वो 5 मिनट में आ रहे हैं, स्ट्रीम एंड कर रहे होंगे। रुक मैं देख। हाँ देख स्ट्रीम एंड कर रहे हैं वो, मैं देख रहा हूँ स्ट्रीम एंड कर रहे हैं वो। स्ट्रीम एंड कर रहे हैं वो, स्ट्रीम एंड बोल भी रहा हूँ मैं, खबर ही नहीं है बिल्कुल भी। मेरी भी तबीयत खराब है यार, जल्दी जाऊँ मैं बस। हाँ हेलो, मैं इसको बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ ठीक है ठीक। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुन लिया, तो 1 सेकंड में आ रहे हैं वो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या हो गया? यू रिसीव्ड अ व्यू फोटो। कहाँ नहीं खोल पा रहा? हेलो, नहीं खोल पा रहा फोटो। कैसी फोटो भेजी है पता नहीं।
हम्म। हाँ हाँ कर लो आराम, डिस्कॉर्ड में ही तो है। कहाँ जा रही? हाँ। क्या हो गया? बाय फिर बाय। 50 बार बोल दिया फिर भी बाय बाय। पगला गई हो का? ओ पगला गई हो का? ओ अच्छा चल बाय। सो जा चुपचाप, सो जा। फालतू की बकवास नहीं चाहिए मेरे को, सो जा। सोने का मतलब सो जा। नहीं, क्या बोले जा रही है? सो जा आप चुपचाप। चुपचाप कहना ना, सो जा आराम से। कहाँ? नहीं जाना नहीं है कहीं भी। जब सोना नहीं है तो जाना भी नहीं है। नहीं, बोल दिया ना, नहीं समझ नहीं आती। बोल दिया ना। नहीं का मतलब नहीं। नहीं का मतलब नहीं। नहीं का मतलब नहीं। ठीक है, जब बैठ इधर। हम बैठे हैं ना इधर। हैं, हम बैठे हैं ना इधर। फिर मैं भी जा रहा, 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 यही करने जो तू करने जा रही मैं भी जा रहा करने। ठीक है। नहीं मैं भी करने जा रहा फिर। नहीं मैं भी करने जा रहा फिर। सेम जो तू करने जा रही मैं भी करने जा रहा। हाँ तो फिर चुपचाप बैठो तुम भी। ठीक है। बातें कर और क्या करेगी? बतियाओ हमसे, हमसे बतियाओ। डाक भैया आ रहे हैं, बतियाओ हमसे। No, thanks। ये क्या बात हुई? नो थैंक्स। नो थैंक्स वाली कोई बात नहीं होती इधर, बतियाओ हमसे आके, यही से नहीं होता है। हाँ क्या हो गया? डाक भैया किधर गए? यहीं है, आ रहे हैं आ रहे हैं। आ रहे हैं डाक भैया आ रहे हैं। कहाँ हो डाक भाई?
ओ डार्क भैया कहाँ हो? हाँ आ गए, देख आ गए। बोला था ना आगे आएंगे आएंगे, आ गए देख। हाँ हेलो। अरे वो चैट में व्हाट्सएप पे लिख रही है, वो व्हाट्सएप पे लिख रही है। अरे तो उस पे लिखना, भाई बहन वाले ग्रुप में लिखना, मेरे को अलग से क्यों लिख रही है? जब वो आगे डार्क भैया यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं पढ़ पाएंगे वो। मूड ही अरे तुम पढ़ा। अरे वो कह रही है क्या कर, मूड खराब हो गया उसका, कह रहा वो याद आ रहा है। ओ डार्क भैया। हाँ और कह रही है मूड खराब हो रहा है उसकी, वो याद आ रहा है। क्या? हम्म। रो रही हूँ। रो रही है। क्या? हाँ बाल्टी तो देना पड़ेगा भाई, सब बाल्टी दो इसको जरा। अरे बाल्टी तो ठीक है डार्क भैया, वो बोलो ना अभी क्या कह रहे थे वो फोटो देखने के बाद क्या कह रहे थे तुम? अब बोलो ना। अरे वो आ, बोलो बोलो इसको, इसको इसको बोलो, इसको बोलो। हाँ हाँ, भेजो इसको। हाँ, अब वो तुम जानो, अब इसको भेजो एड्रेस वगैरह। हाँ, अब भेजो इसको एड्रेस, लिखो लिखो। इसको एक बाल्टी से काम नहीं चलेगा डार्क भाई, इसको है ना 10 बाल्टियां देनी पड़ेगी, 10 इकट्ठी। हाँ इकट्ठी 10 बाल्टियां देनी पड़ेगी इकट्ठी। नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं कम है, चलो कोई नहीं, 15 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो 15 भी कम। हाँ ये भी बात है, हाँ ये भी बात है, साल का जुगाड़ भी करना है, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, अरे हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। बाय फिर बाय कहाँ जा रही? अभी डाक भैया आ गए तो अब जा रही। पता नहीं क्या है, सोने जा रही होगी और क्या। अच्छा अच्छा हाँ बस चुड़ैल चुड़ैल बजने अभी, और हाँ बाल्टी भी तो भरनी है इसने, बाल्टी भी तो, अच्छा हाँ वो भी बात है। अच्छा तैयारी करने जा रही होगी, क्योंकि अभी 12 तो बजे, 12 तो बजे भी नहीं है अभी। हाँ क्या हो रहा है? हाँ जस्टिस क्या हाल? खराब है। अरे वो सो गए उसके घर में सारे, किसके घर में? इस वजह से। हाँ अरे वो अब है। भाई चलो क्यों ड्रेक भाई? ठीक। हाँ कल खाया था भाई, कल। हाँ कल खाया था। जियो जियो खाया आपने?
and weaknesses on Hello. Breeze, but on the maps that they're committed to, their Sunset, for example, they've Hello. looked excellent. The strategy is really coordinated. Players have also leveled up. Quick in their last game looked so much better than the rest of the season thus far. This is a Loud that always wakes up the deeper they get into tournaments. It seems like they find the ability to hit the peak at just the right time in like every event. Yeah, and I think as well that they've already shown here that they are willing to kind of detract away from the commitment to the Phoenix and Breach. They're obviously busting out the Euro in particular, but QCK's individual performance across all the duelists has been pretty incredible. I keep saying that nobody plays this much Phoenix and comes out looking like, you know, a great duelist or a great individual player, but somehow he's doing it. Yeah, you guys mentioned Les already, who's Let's also having go. a great tournament. I Chill by. believe he is Let's standing by go. with Mika Let's Fabs. go. Take a look at this. Not just quite yet. What about this? What about this? I want to look at this because this guy's Yes. stats have been ridiculous this ड्रेक tournament. भाई All आप कौन सी every चेयर split. यूज करते हो? क्या क्या क्या? कौन सी चेयर यूज करते हो आप? शेर हाँ, शेर ग्रीन सोल का है. ग्रीन सोल. It's not a good one. ग्रीन सोल. मतलब सही प्राइस ये नहीं है, वर्थ नहीं है प्राइस. मैं ले लूँ एक चेयर. आज ही आया. कौन सा ले लिया? ये इसका क्या नाम था? ACS करके कुछ है कंपनी. 20,000 के अंदर गेमिंग चेयर्स अच्छा नहीं आते हुए. 20,000 10,000. मैं बोल रहा हूँ 20,000 के अंदर वैल्यू फॉर मनी गेमिंग चेयर्स नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं. यस. वैल्यू फॉर मनी मतलब ओवर प्राइस कह रहे हो कि? हाँ, ओवर प्राइस्ड है सारे गेमिंग चेयर्स. ओवर प्राइस्ड है. वैल्यू फॉर मनी जो तुम कितना वैसे दे रहे हो उतने का मैंने कंफर्ट 10K नहीं में है. लिया. हाँ वो जो एग्जैक्ट ग्रीन सोल का आ रहा है ना, लंबा हाँ हाँ, सेम सपोर्ट, हेड सेम सेम. सपोर्ट, 180 हाँ, डिग्रीज का वो सब कुछ इंक्लाइनर. मिलेगा, लेकिन सब कुछ मिलेगा जो उनके यूज हुए मटेरियल्स अच्छे नहीं है, ये बोल रहा है. ये बात तो है. ये बात तो सही बोल रही है. हूँ. गेमिंग मैं चेयर्स बोला ना, ओवर प्राइस तुम फील दस करता है. 15 हजार में कोई एर्गोनॉमिक चेयर ले लो, बेस्ट है एक्चुअल में. प्रॉपर लंबर सपोर्ट मिल जाए. ये सिर्फ देख, फीचर के नाम पे कुछ भी दे रहे हैं, पता है. लगता है भाई जब स्टार्टिंग नया रहता है ना, अच्छा लगता है भाई, मस्त है, वो है ये है करके, लेकिन बाद में 1 साल यूज करो, बाद में पता चलेगा. मेरे ऐसा बैग में कौन पता है कहता दो पता है, मेरे बैग में दो पिल्लो रख के बैठता हूँ मैं डेली, पता है. है? 2 पिलो रख के बैठ पाते हो आप? यस. मतलब स्पेस मिल जाती है बैठने की. मेरे को वैसे बैक में बैठ बहुत जा इशू है. बैठ जा. डिस्क पेन है मेरे को, पता है ये चीज. मैं जब ले रहा था ना मेरे देख, को भी जब है. ये लॉन्च होता ना 17,000 का, ठीक है, जब सेल पे मैंने ग्रीन सोल जो है ना ऑफिशियल से, मैं बात किया मेल पे, ऐसे स्ट्रीमर को, मेरे को कोई ये चाहिए एकदम, मेरा बजट इतना इतना है. तो मैं बोला हाँ ठीक है. जब अभी दिवाली का सेल चल रहा है, मैं ऐसे डायरेक्ट ऑफर नहीं देते वैसे, लेकिन देख अमेजोन को दे रहे ऐसे, उनको एक को दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है. तो आपको हम दे देंगे फाइनल प्राइस 12,000. ठीक है, मैं उठा लिया तब. जब 17,000 का तो 12,000 मिल रहा है ऑफिशियल चेयर, तो मैंने उठा लिया. ये आपको ऑन स्ट्रीम बोलना चाहिए. एग्रीमेंट हुई थोड़ी है भाई उनके साथ. एग्रीमेंट हुआ नहीं ना उनका. क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं. मैं तो देख भाई, सुनो सुनो, अगर मैं ना म्यूट हो जाऊं ना, मतलब मेरा माइक ऑन है और मैं चुप हो जाऊं, तो समझ जाना मैं सो चुका हूँ. वो ऐसा है क्या? हाँ, और कोई भी हो ना, ये बोल रहा डिस्कनेक्ट कर दो मेरे को. मेरे को 27 घंटे हो गए मैं सोया नहीं हूँ. भाई नींद, बोले भाई नींद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब स्टार्टिंग अरे करता था ना, गेम बहुत खेलता था. अभी मैंने कम कर दिया मैंने, लेकिन लेट नाइट स्ट्रीम कर रहा हूँ ना अभी भी, तो बहुत बॉडी पे बहुत असर पड़ता है. अभी लगता है भाई मैं 2 दिन खेल लूँगा बिना सोया, वो स्टार्टिंग चल जाता है, बाद में लेट जब होता है ना ये अरे नहीं नहीं, वो गेमिंग वाला इशू नहीं है. और तो क्या बोलूं, टाइम ही नहीं है, मेरे सोने का टाइम नहीं मिला आज.
गेमिंग के नहीं बोल रहा, मैं सोने वाले चीज़ ही बोल रहा हूँ। तो भाई मिनिमम 7-8 घंटे चाहिए, मिनिमम तो 6 घंटे के ऊपर चाहिए चाहिए बॉडी को। भाई पता जब पड़ता है। डोटा टू, पता है डोटा टू CS 1.6 जब खेल लेते ना, सोते नहीं थे भाई, कैफे में 2-2 3 3 दिन उधर ही फोटो। जब डेली काम का जो 1-2 घंटे का करो और फिर से पीसी पे बैठ। अच्छा, आपने भी कैफे से स्टार्ट किया क्या ऐसा गेमिंग वैसे के? कैफे से स्टार्ट किया मैंने। तो उससे पहले आप किस पहले? मैं तो देखो पहले ना मेरे पास लैपटॉप था, लैपटॉप से स्टार्ट किया, थोड़ा लगा हाँ चलो मैं तेरे मजा को आ रहा है। लिटरली बोलता हूँ, मैं पीसी लिया था 2018 में, खुद का गेमिंग पीसी। उससे पहले तो कैफे से खेल रहा हूँ ना, जो भी मैचेस किए थे। देख डायरेक्टली। मैं, हाँ देख, मैं जब गेमिंग के पीसी भी लेता ना, कैसे भी करके लैपटॉप पीसी, मेरे को फ़ायदा नहीं था। क्यों फ़ायदा नहीं था? मेरा जो, मैं इस पे था, गांव में था, उधर बेसिक इंटरनेट भी नहीं था, तो मेरे को लेके भी फ़ायदा नहीं था ना। तब हम्म, ना इंटरनेट है ना ये लाइट है, तो पीसी लैपटॉप लेके भी क्या फ़ायदा? लैपटॉप होगा तो कितना घंटा आएगा? 3 घंटा मैक्सिमम। तो छोटे गांव से था ना, तो इसलिए नहीं लिया मैंने। जब मैंने छोटा सिटी शिफ्ट हुआ, तो सिटी शिफ्ट होने के बाद मैंने 6 महीने में ही लिया मैंने पीसी। Me and you, Josh, we were talking about it just before we got into the game. But you think of that optic core versus loud जी भाई matchup. कहाँ That गए? was, El हो Clasico. गया हो गया। And now maybe the torch over to this one. We've seen Sentinels versus ओ जियो जी भाई। so far in 2024, and it's always pushed both of these teams to great heights. देखते हैं भाई, देखते हैं, दोनों अच्छे टीम है आज। भाई क्या खेला भाई इन लोगों ने, भाई मजा आ गया। जंजी ने जो खेला भाई 2-0। Gen.G looks scary. You do not want to be in the lower bracket if they end up down there at some point. Obviously, PRX no pushovers either. But yeah, this is a really जो इन दोनों में जो हारेगा वो PRX के साथ खेलेगा। regional title in Americas to fight over. That was Loud that ended up taking it away. This year with kickoff, stage 1, stage 2, we're going to have 3 potential opportunities for regional fights like this, and then also all of the opportunities at Masters events or at Champions. SEN, they're not just fighting here for the rivalry. वेश के सेंटिनल जीते। That they've got a serious chance of being सब लोग चाहते हैं सेंटिनल जीते। सेंटिनल फॉर्म तो है, लेकिन देखना पड़ेगा ना। देखो ना, हाइप भी जंजी करना। दे भाई, किसी ने नहीं सोचा था जंजी आज 2-0 मारने वाला है आज। हेलो। सेंटिनल अरे बाप हाइप रे, भी तो ना। जस्टिस सर भी है। वाओ, क्या हाल है भाई? जिंदा है। अरे हाल पूछा भाई, जिंदा है क्या बोल रहा है? अरे जिंदा है का मतलब जी रहे हैं अपनी जिंदगी भाई, बस चल रही है जिंदगी, कट रही है क्यों जिंदगी। क्यों, क्या हुआ भाई? जिंदगी में मुश्किलें आती अरे कल है। फ्री है क्या जस्टिस भाई? कल फ्री हो? कल बताओ किस टाइम? दोपहर में 12 बजे के बाद या 11 बजे के वो बाद? नॉक नॉक करने आएंगे, नॉक नॉक। लेट मी थिंक। कल दोपहर 12 बजे से। अरे तुम लोगों ने डिसीट खेला है क्या वैसे? सॉरी माय बैड डिस्टर्बेंस के लिए। मैंने डिसीट खेला। तो फ्री टू प्ले हो गया। डेसिट तो फ्री है तो ठीक है, डेसिट ही काफी है वैसे। फ्री है ना डेसिट? डिसीट टू 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 का पता नहीं मेरे को, डेसिट टू पैसे दे के हो गया, लेना है फ्री तो टू प्ले हो गया ना। डिसीट टू तो फ्री टू प्ले हो गया। ओके ओके, तो वही ठीक है ना, अच्छा खेलना है ना चाहता हूँ खेलने के इसलिए लिए। पूछ हाँ रहा हूँ। हाँ, खेल लो। हाँ, कोई खेलेगा तो बोल देना। एक दो बंदे से मजा नहीं आएगा रे, पूरा प्लेयर चाहिए डेसिट 5-6। 2 का क्या हाँ है मतलब? ना, मेरे पास दो बंदे हैं ऑलरेडी। डेसिट का वर्जन 2 है क्या? हाँ, डिसीट वर्जन नहीं है, पूरा गेम ही नया है। उसका पूरा पूरा नया बना दिया। मतलब मैंने देखा। बेसिकली वही है ना जो लाइट ले तो जो छोटा ला। प्लेयर चल वो रहा है। सीएस का ही वैसा हाँ कर जैसे ज्यादा सीएस के साथ 15 किया मीटर ला लो, बंद कर देना। है। घर बात कर रहा है। लाइट लाओ ना छोटा। हाँ बस, सीएस का आलू जैसा भी किया थोड़ा है। वैसा ही कर दिया उसका लगता है। क्यूटी क्यूटी। शॉट। जखन का मैप है एक्चुअली, खेलेगा जखन और क्यूटी। भी खेलेगा।
Okay. Oh, Nice. God. इस CS के लिए प्लेयर्स देख रहा हूँ रे, सोलो बहुत नॉन मुश्किल है CS. Already seeing examples of both of these teams just trying to be proactive. Yeah, but I call in that mid push earlier, fighting through into spawn. So I think what I said earlier, both these teams, they're going to be pushing themselves to brilliance. I think you might be seeing it. यार एक सेकंड, दो कंट्रोलर्स हाँ देखा ना क्या तूने? ब्रांडेड ना सेंटिनल्स नहीं खेल रहे हैं. नोटिस नहीं किया क्या पिछले में दोनों टीम में सेंटिनल नहीं थे? डबल स्मोक का ही ये चल रहा है पूरा टीटी जो चल रहा है ना, डबल स्मोक का चल रहा है इनका. जमाना बदल गया है. तो बोलते हैं मेटा में जो होता है ना, कल एक एजेंट का ये चलता है. आज कवर रहे चलती है पढ़ाएंगे. There for Loud, offering Sen another opportunity to get back into it. Not planted for Evan. Hello, Joji bhai. Oh, and the pick goes down to. Oh, now Joji Sassy bhai. is pretty far away, but I think. Joji bhai, no more. Joji bhai, no more. And no more? Hello, In Discord. It's in Discord. In Discord. Be the bread and butter of a team like Sentinel, just trying to find. कितनी देर से ऐसे बैठे हैं? कितनी देर से ऐसे बैठे हैं? मैं As soon as the nade comes through. क्या जियो जी अभी 15-20 मिनट से. Taken out now, just two will stand, and it could be just a bit of random spray, a bit of random spam that saves the day. फटाफट कर देता हूँ मैं. Traded, hit going down, 10s, 1v1. Really have to come for it as a bulldog, but will it be all bark or bite? Tends to be the latter, but 10s is wielding it. Great clutch there. Enormous round for Sen to be able to pick up. The momentum piling forwards for Sentinels as they win the bonus and knock Loud's economy down. And what a fumble after Sadak's able to get a 2k at the beginning. And it's a 5v3. The stun just comes through a little too late for Sadak to be able to follow up on. And then the flood that comes out is late too. And they've taken a huge player advantage situation set up by their IGL. Let's go. बताने अपने कल फ्री नहीं है क्या कल? हाँ मैं कल 12 से 6 बजे तक तो नहीं होऊंगा, सुबह होऊंगा मैं फ्री. कितने बजे से? सुबह हाँ 9 बजे से तो अवेलेबल रहूँगा. 9 बजे से 11 साढ़े 11 तक हूँ मैं फ्री. अगर हाँ वो वाला वीडियो वाला ये देखा ना सर मेरे को थोड़ा सा कैसे बेसिक चीजें आओगे टाइम हाँ मैं बोलता हूँ मैसेज करता हूँ. ठीक है टीम कर देता. Having said that, we know that Loud are an extremely good team when they're on. Actually feeling the danger there. The dog spotting out too. John is so wide. Yep. That is so much info. John's like, guys, there can't be anybody B because they're all looking at me in mid. Lucky to not pay with it with his life. Nade waiting.
Loud. Could be some danger if they find a few initial picks rattled off maybe with the Sheriffs, but use the Trailblazer early. Nade follows through with a snakebite exchanging, the handshake dropping down. Sadak was alone there. There wasn't really much to do with in terms of the follow-up. They have to face it wide though with the aftershock being played for. So much damage done to these Loud players. Positioning's known and noted, and so 3 survive into it. Zekken picking up 3s, 1 away now from the big critical ultimate. On attack side, that showstopper is going to be putting in some work if he manages to earn it. Yeah, and this is the problem once you start snowballing forwards. Loud are going to be 1 away from having a broken economy again, and Sen are starting to get up to key ults. Look how nice as well the Sentinel's utility usage is when they get into a plant scenario. Zekken's holding nade to try to deny someone who might try to stop the plant, but he's also ready to throw counter utility with that nade as soon as the retake starts happening. They know how Loud are going to play, and they've already prepped the counter to stop them. Truly one-sided affair. I want to see some bite back from Loud, really. Well, this is interesting. Zelsis went for an orb lineup that's all the way into mid there. You see how there's 2 Viper orbs layered on top of each other. And that's going to disincentivize what Loud have been going for. This is Sentinel's Viper orb in mid there. You're going to take a lot of damage if you want to try and fight mid, if you're Loud. And that's, broadly speaking, what Loud have been doing on this defense side so far. Only 4 rounds in, though. Dog right on cue there, at the minute mark. It's going to be broken for a bit of that mid-round information, but only shown by the 1 player, so Loud still left scratching their heads ever so slightly in terms of wondering where this might land, but they are starting to guess now correctly. Seekers is pointing them directly into the right targets. Sassy's going to pick up the ult orb and get Seekers himself. Seconds left. Which direction is this going to go into? They've still got 2 players planted into mid here for Sen, but the spike over towards A, they are struggling to get themselves in. Push and pull, ebb and flow of the map, not really working out in Sen's favor, and they need openings and they need options right now. मैंने AFK चैनल सेट कर दिया कि GOG पर जब भी 5 मिनट से ज़्यादा AFK जाएंगे ना सीधा AFK में भाग जाएंगे. 20 seconds left. What are they even going for here? Oh, Down, but really time is going to be the worst enemy as a team flash. John QT there, close to the corner, cut to wide. Satchel's through and over the top. Kabazine still anchoring. Tucked tight to the corner, Sassy planting the balls on the man to go for that one out wide for a heaven plant. The wrap around, now Zelsis becomes a key player in the game. He's managed to pick up his orb and reposition it too, so he's got more control over towards heaven. That's for you. So he's set to try to blind somebody playing elbow. Tenser's already repositioned up top. There's no follow-up off of that flash. It's more Kabazine with the stun finally now to try and at least attempt that reclear, but you're going to have to be giving this one up. They don't have positioning at all. Zelsis is backed away, playing a really passive position. 10 spots it. That's for that fight. And they've won out the at least critical ones. Now no mollies for Zelsis. Let's hold to it. Les is holding for it. And watching for it. That was really nicely done there by Loud. Coming back in, they had so many different things that they needed to navigate. You saw that there was no follow-up. अच्छा कल शाम को 6 बजे के बाद मिलेगा क्या वापस? कल शाम को 6 बजे बाद मैं 6 बजे भी थोड़ा डिले करके बता रहा हूँ वैसे तो 5 साढ़े 5 तक का तो मेरे को बोला गया है कि फ्री होंगे तो घिसपिट के ही मान लो अगर 5 बजे का बोला है तो 5:30 तक 5:45 तक फ्री होंगे तो 6 बजे तक आऊँगा घर. तो अगर 6 बजे मैं आ जाता हूँ तो एक बार आपको DM कर दूंगा. अगर मॉर्निंग में अगर आप आ रहे हो तो ठीक है मेरे को बता देना, और अगर मेरा भी कुछ इशू रहा मॉर्निंग में या नहीं रहा तो फिर अपन शाम का सेट कर लेते हैं प्लान. ठीक है. हाँ शाम को तो मैं फ्री रहूँगा ही रहूँगा. बाकी तो फिर गॉड नोस. The other thing that's amazing about that Viper orb though too is it keeps people in mid because you could lurk through it. Yeah. So I think we'll be seeing that one come out to play a little more. With a present show though, now with a boombot. Touch tips. Yep. Handshake. QCK and Cowanteen are really close to huge ultimates too. So Loud being able to put that previous round on the board is just so huge for them to stop the bleeding. Everything was red. It's a lot that could happen right here now with 50 seconds left. QCK shows it, body checks the dog, breaks it down. Now he's one away from a large hold of his own. Onto heaven control, but now here it is. Showstopper, fault line to stop this one. Zekken was blind as anything, no way with the movement. Just evades capture.
Still low enough though. Tens now with a TP into the back of the side. That was not punished, and it is that full retake protocol, but already ramp control game for Loud. Look at them clearing that so damn proactively. Meanwhile, Celsius is so far away from the rest of the squad, just trying to find the timing for a late lurk. He might be too late. There's a kill. Here's a showstopper. Finally online. Rocket round towards the back. Sassy is dropped like a fly. Tens has to do the most now. He stands his ground and wins his one out. Kawazine falling out. Sadak though. It's been slowed down. To Molly to push him out of position. Zekken. Celsius is here. Finally. Arriving to the party though, Util in his hand. Sadak adjusts it and watching for it. Tens now 1v2. The double face is there. Terrific together. It's 2 years. His partner in crime, Mr. Sadak himself. So with that defuse online, that's going to be that second round on the board. And Loud starting to get a handle now in terms of how to tackle these A sites. Yeah, finding the timing there to re-push ramp before Sentinels were anywhere near set up for it, right? Sen's general game plan is we're going to get to site, we're going to have some kind of post-plan idea for aggression, or a backup plan like Celsius going for that late lurk. But if you can find the timing between them going to site and setting up the next play, which Loud did, you can be very disruptive. And also, one of the big crucial factors in round 5 and 6 to Loud winning is that they just had players able to take ones and win duels. You saw Tens at the end there. We've seen him do magic in those positions sometimes before. But Loud is shooting back. Might sound reductive, but it's very important. Here's that same orb lineup, but this time it's just going to go straight into a pit. I don't think that's going to have the value that Celsius was hoping for. Kind of risky to go and retrieve it too. Yeah. Basically lost, isn't it? Can't really be reclaiming it unless you have a plan to re-clear, which is stacking bodies, don't get me wrong. Just hoping that a few stray bullets might land into the cranium of less, but he's tucked to safety, making sure the pit will stay up. If Sen get a read that Loud are playing heavy over mid at the start of these rounds, which they generally are, there's normally 2, sometimes 3 players there, Sen might be able to make an adjustment and go for more burst executes. But all of this is so based on having a read of what your opponents are doing in this match. And they will be changing it up compared to the last time they faced off. Re-clear called, it looks like, was the dog John QT. He's been pushed forwards now, tucked. And there it is, kill claimed. QCK, fault line. Definitely there, actually, laboured enough, but still, the trade online. The call's being made to try and speed up the play now into B, but already that Util, look at it. I mean, the paranoia, the smoke drops down, cuts up the side, and with that lurk into mid, Sassy not rewarded for it. Tens has the spike here, looking eager potentially to take some fights here, but has to stick the plan now towards D4, but his team do have its back and more. Look at that! Coordination on display. Sadak creeping and crawling, he managed to weave his way into the site there while all that chaos was going on, but not enough to get too much more done. And that was a tricky round for Sen to be able to convert. When John Cutie goes down over towards A, Sen are forced. Their hand has to go B. And Tui's knew it was happening. The Loud players were there, and yet Sen come out on top anyway. Celsius destroys that attempt to flood retake. Dodge the flash and pick up both players. Good job. Sen, they are running away with this a little now. Getting to dangerous territory. Loud put 2 on the board with some slow, nice retakes, but now the economy's broken again. Yeah, strange, isn't it? How that ends up working out, but quite salvage. Will keep any of the money running. Smoke. Gonna be disrespected apparently. At least with the flash, they know that nobody's close, tucked to the corner. A lot of players now looking for a punish on the John QT. He's been noted that he plays here a lot, solo play. They're just going to posture and pick up the orb. And if they can find a pick on John Cutie and push him away, it'll create timings where Loud can worry about the rest of the map. And I think they've got a very good read that John is playing solo A a lot. That's an expectation that maybe Sentinels can mess with a little, but at the moment, Loud have found a decent timing here to make a little bit of danger in the round. And the more the time ticks, the more you start to get worried in situations like this. Absolutely. Especially when we saw one of the rounds go down to only 15 seconds on the clock. I think you can get really punished. And Brent, the spike is going towards A, which is where Loud are going for their gamble stack. There are only 30 seconds left on the clock. Sen are quiet, but so far 30 away. seconds left. They're faking like blocking off Less's sight lines, but no one's budging. No one's budging. Kawazine looks to be the contact for Paranoia play that's being held around the back now. The nade flying forwards, close quarters, still doesn't win it out with a stinger, and the backside players are brutalized, eviscerated. Sadak goes for the flash repeat.
Safety in चलो numbers. भाई What a क्या कह swing रहे and great dodging movement by John as well. Can Les pick this up? V3. He's been a monster. He's got the rifle to do it still. There's going to be no gaps there, not with Sentinels. They know who they're up against. And another round where SEN, it looks dangerous on the mini-map. You see them walking into the trap. QCK even manages to get one. But everyone on SEN is playing really tight together. Making sure that they can trade, making sure the spacing's excellent. It is. Absolute cinema. And they're running away with this. If you wanted to have an expectation coming into Split, I think it's a little difficult. Because the two times we've seen these teams play before, one was an extremely close split that Loud ended up winning, with Sadak just popping off at the end of the game to drag him over the line. And the other was a flattening. It was Sentinels just utterly tactically dominating the game. And this is looking to me to be more like the latter. Obviously, the scoreline would suggest that, but the approach, the way that SEN is so patient around the map, dealing with everything that Loud throw at them. I think that time, having been the first team to qualify for playoffs, has been used very wisely. Oh yeah, rest and rejuvenation. I mean, listen, I've seen these players wandering around the hotel, and the coaches, Kaplan and Drew. They had very dark bags under their eyes, but now they've finally been able to get some sleep. And you saw there in that shot of the stage, actually, Sadak popping off, making sure he's communicating what he wants to be adjusted heading into this. Tack timeout taken for Loud. Are they going to be able to find the adjustment that gets them a little bit of a cushion to work with? Because the economy has just never been in a good spot. No. Really quite vital round coming up here, just because of what you mentioned, the economy situation. Is a deep fault line. That's just off the rip from Kawazine into market, but there wasn't really much to follow through with it. Looks like maybe it was just to set up B main control for 2 years. Now look how difficult this is from Les and Kawanzine's point of view. You know, when this orb goes up, it's very difficult to know if someone on SEN is just quietly taking the timing through. And so these A players have to be cautious, concerned. I've got your trail. Little portion of the round though, with a minute 10 onto the clock. You can see those Seekers offloaded, pointing in various different directions, but it doesn't really give SEN an indicator. They do know that a male is going to be free, or not male, but Ropes itself. Yeah, that Seeker went a long way before it hit Kawanzine over in A Heaven. So SEN have a pretty good idea that that path to A Heaven is fairly uncontested. And the dog here actually might give such bad information. Broken. It didn't see the second player of John QT. We'll see what SEN end up going for. Certainly relying a lot on the mid-rounding here from John, rather than having set game plans going into the rounds. Sadak, Seekers of his own now, spotting all the way through into mid. Everybody bursting through. Now the snake bite. Used on the Q as he hears that Trailblazer. Where's the follow through now from the rest of the team? B main. Lost control of this one. There's going to be questions asked now of a lot of these Loud anchoring players. They want to give it up entirely. Don't want anything to do. Yeah. That paranoia thrown from Tens is lovely. Would have caught anybody over towards Rafters, and yes, the time is low, but look how devastating this looks to retake. How do you do this now? Yes, you have a rolling thunder, but it's going to be utilized hopefully now to clear through into the bit. They've got this late lurk, the flying from Sassy, and yet he's caused all the distraction in the world. Gets out with his life, close to the corner, cut him up. Still, John QT. Quality tactics, quality time now with the whole family as he's sat back into the spectator. CQCK forward. Leading it with the team, but it's already wrapped around, so they got to expect the Sassy's there. No, it's a half clearance. Not enough. 2 years TP adjustment. He's on that high ground position, just propped up, but Les now needs to get more done, and he can't do it. It's going to come down to just a bit of spray and pray, but already time ticking, so 2 years, no chance in hell. And it's another situation, Bren, where Loud cannot get any level of economic cushionry going. They're going to be knocked straight back down onto a low buy. And that adjustment, whatever it was that Sadak came into the round trying to inform the rest of his team, it did not work. They weren't ready for Sassy here in B Heaven, and they weren't ready for Sassy again once he repositioned into B main. It completely disrupted what Loud were going for there with the retake. The timing could not have been more perfect. The way SEN are working this map, I mean, it's a masterclass. Yeah. Speed running it. It really is. There was a lot of talk coming in based on their regional performances on Split that they might have the best split in the world. And, you know, I was saying, be cautious. We haven't seen them play up against all the other teams in the world, but
man, is it looking clean. I think the believers in the Sentinels split are getting their beliefs confirmed every time we watch. Yeah, now heavy group up. The weaker buy here from Loud using that Trailblazer, trying to be fast onto the approach. Chance here, Zekken tries to adjust the spray, expecting players to swing from that left side. Tens, evacuating, has a Paranoia still left to play for, but the mollies are really clearing him out of position. What's the call now for Loud? Looks like a pivot. Yeah, very mobile though. They've made it feel like it's ramp and they're already pressuring the screens. There's still a trip here for John. And Stens is in their spawn, where they buy guns. They don't have a clue. I mean, they've just caused them to all just be looking backwards as well. Les didn't have any sort of idea. He was just watching in case it was in mid. 2 years. One with a rifle, but no longer. Dropped to the floor, dropped to the deck. Les quite able to do it. Yeah, and it's not really Tens that makes the round-winning play, but I think it was that Cypher trip coming from John. He'd popped it over towards screens. I believe that's how Cowanzine ended up falling off screen. Zels has got a double spray down. Have a look here. Blinded up. Yep, hits the trip. Oh, yeah. And also gets QCK killed because he's right behind him. So it just gives the perfect timing and positioning for Zelsis to go for that spray. I mean, everything is working here for Sen. It must be devastating for the Loud morale. Bear in mind, you have a full BO3 ahead of you, and you knew that you wouldn't be favored here, but it is still going to be mentally difficult to bring your spirits back up. Hopefully of that experience in spades. Oh my, showstopper. Let loose there. There is the trade online from Kawazine. He followed up with the stun at least, but his high ground angle of Tens drops down, gives him the cues. Kawazine just taking a white peek by himself, man. Taking a fight by himself. Yeah, there's back up there, but heads have fallen, heads have rolled, and now maybe exactly what Loud ordered. Yeah, player advantage situation, looking lovely for them. One away from a showstopper too. Sen, they're going to be able to get a plant down here. They're pretty certain that A is completely clear. They saw so many people fighting over mid. But this one is going to be tough, and Loud cannot afford to throw it away. Yeah, just watching for it. Look at that. Loud, great awareness, knowing that Sen are going to have to be playing a bit more proactively, making the moves into the post-plan situation. Sassy is the lone survivor, gets shut down by his former squad. And so Sen, for about the first time in this half, tried to do something fast at the start of the round. And that actually results in Loud getting the round win. Every other round, we've seen Sentinels with a tortoise-like pace to the beginning of these, making sure that they are cautious, diligent about everything. And as soon as they step forward to try to take the fight, Loud are so happy. These players behind Zekken just got wide swung and minced. Crucially as well, final round of this first half, the money's looking good, the ult's even better. The showstopper for QCK. Can play really much more aggressively now that he's got that one. And the silver lining, if they can get to 4, if they can win a pistol, maybe it's doable. But they've got to be securing those wins. Yeah, clean with the rounds that are available to them now. Viprorp does throw a lot of just chaos into the mix. I mean, look at the amount of Loud players. It's just gathered all the way into mid to watch it. They've got 3 players checked and ready. Yeah. And Tens is still holding counter utility over towards B main. That timing was looking pretty good. Just. Now that they've spotted the op though, the call's been made to contact in through B main. So Sen have just got themselves a freebie there. Can now utilize this ult forwards. Running wide! QCK! And now no Valley to be found there. Out wide once more. Still QCK's on a swivel. Molly's vulnerable him up. Pushed him out into the open. Easy collection of the kill. Now there's 45 seconds left. Chances to slow this one down, but it looks like Sen have no intention of it. Forward positions once more. Kawazine drops down from the ropes here, spraying down, but Tuyes is disjointed on the rest of his team. Kawazine out wide. The reset. Oh, Rolling Thunder lifts him up in the air, sky high, and then one player standing towards the back as a crossfire setup, but the aftershock is elite. Kawazine on for so much more. An ace on the cards, less to stick. This one comes down to the spam, but John is stunned. A tap, he's going to be out wide, he's going to be forced wide, knows it. Info gathered now, but another stick now. Less finally to trust, maintained in his teammate, maintained in him, might be punished. A tap, out, force with a jiggle. John QT, balls of steel! What a clutch! Cowanzine was forced to reload in the middle of that, and John took the timing as Cowanzine reloaded.
भाई दोनों टीम से यार what a round Immediately pause लो time out लो इसको Les explain was करो still on the spike. है thousands in sexy खेला लेकिन Kawanzin had done so much. सब कुछ More किया than उसने anyone ब्रिज से जो could कर have been सकते asked थे to do. But the timing on that of when to take the fight in the 1v2 was utterly superb. बस एक दूसरे को मारो मत God damn, absolutely unreal stuff. Well, we heard from John earlier. Let's find out. We definitely did a lot of mistakes and we looked rough. We've had 2 rough days, but we make sure to rally the team. Everyone stay focused on the goal, and we won 2-0. I watched all of their VODs. I even came here and just spent all my time watching Split and Lotus. I've noticed their patterns and what they like to do, what's their tendencies. So it wasn't that hard to guess what they were doing. I like to tell my teams that the devil is in the details. Just small things that adds up and create that big thing that will make the difference. Right towards the back TP on top. That's amazing. This man is terrifying. What an angle to find. All the way forwards, Judge in hand, Shin. It's away with it. Still, reinforcements arriving. Narrate can't withstand it though, the pressure. It's too much. This man is a thing of nightmares. The mobility, the confidence, both working in tandem. He's on for the ace. 2-0 वाले फील आ रही है अन्ना फील आ रहा है 2-0 वाला After the 2021 World Cup, so it hasn't been all rainbow and sunshine, but the fans still stuck with the team. Since I joined, I mean, I'm lucky to say we've only had high highs. We've won all of our off-season and VCT so far. So I mean, everything is going great right now, but we're still process-oriented and goal-oriented. Even if we lose, we still make sure that to keep it consistent and not really worry about the comments. क्या होगा यार क्लबिंग हो सकती है Consistency is key at the end of the day. It's clearly working out for Sentinels. I mean, he was talking about it. They had time in the off-season. They've been winning a lot, but with that comes a lot of hard work. They've shown some of the most maps of any teams coming into the kickoff, coming into the entire league this year. But part of that is just them honing these map pools. All the questions placed onto their split. Why do teams keep letting it through? Well, the reality is, it's a middle ground map for most teams. लॉर्ड में मेरे को कौन-कौन पसंद है पता है दो पसंद है एक लेस बाय और एक सादा Sense Lotus looks good. That means you have to go towards this. So pistol round. Loud decided to take a ramp control at the start. Sen wanted to fight over mid, but there was nobody there. बेटा किधर थे? Still got some people really far away from the action. Real fast refight. There's no connection there, so Les is able to just skip and hop away, but John QT is just as watchful eye onto it. There's a gap into the smoke. Maybe a bit unintentional there, maybe just a bit rushed from Tears. Sen are also expecting there to be more players on site right now. Like, okay, well, where are the other 2 players for Loud? They lost track a little bit of where Kawanzin and Tui's could be, and now they've lost a lot of map info too. There are still chances here for the Loud players to turn things around, but this silent jump spot. ये साइलेंट जंप कैसे करते रे Bounce करके जंप करते हैं Look at the rest of Sen. लेकिन मेरा तो पड़ता है आवाज Reclearing areas of the map, trying to regain some information, making sure that they don't offer any 1v1s. वैसे ही बराबर बोला स्ट्रिक्स यार मैं पानी में कर रहा था तब तक आ रहा था win conditions of Loud right now. And against कल ब्रीज में मैंने ट्राई किया था making sure to regain some of that map control. No kill found onto Kawazin. Less a chance really for him to bite back and fight back. Here it is. Turn of the fire, Tense from the wrap around. He is running all the way through. He knows the time's against him. So pistol round. Sentinels again looking like just a map of pure domination. This could be extremely similar to the last time we saw these teams face on Split. By Sen bundle होने वाला है Pure Sen domination. Sadak caught off guard by that one. John picking up the 2K. It's just enormous. That paranoia, by the way, too, lovely from Tense. They didn't know, as far as I'm aware, Tense का util usage का इतना crispy हुआ है ना. Actually, पूरे event में. Loud they've got to force. Right, you're down. उसका 10% में tricks में आ जाए तो. You need some momentum. All relying on this one. मैंने क्या किया? Full investment. ना अस्कांडे लॉबी में कल झूल रहा था ना ये. Trips though to stop them in their tracks. They try and take control of this. The dog broken before it even triggered into it. They do find it. Reface, Elsis, that is incredibly brave. Well, second
following through with the bullets as well as Stinger. That's just a wide bit of a gap there still. भाई वो लोग ने फोर्स भी क्या है खत्म है गेम जल्दी क्या कर सकते हैं 10-3 में फोर्स नहीं किया अभी चेंज करेगा क्या होगा 11-3 हो जाएगा पेनल्टी में कमबैक मारा था ना 11-2 He's very favoured in a fight against 2Es unless 2Es gets the jump on him. No way, just the ghost doing work. That's bonkers. Yeah, it's got the one pick, but there's no real follow-up there with the players. I mean, they can't really react appropriately. So flying. It's pulling Zelsis over. It is making the A site weaker here. मत करो. Okay, stop. QT though. Cam back online. It's going to be spotting the crossover. 30 seconds left. There it is. Camera taken out. They'll be calling out now that they could have been compromised towards spawn, but now time running against them. Loud, get a move on. Cages, propped up, pushed up. Behind it, John QT can't follow through after that trip. There's a smoke in his face. It does make it quite dangerous, quite difficult still. Yeah, होती है. Yeah, होती है. Why not? Gets the job done. Really excellent teamwork and anchoring again there from Sen. Yeah. Didn't have a cage for himself to be able to play inside of, but has a smoke there from a teammate. Somebody inside the smoke that he can spam off. It's really solid setup. Beautiful little team plays happening all over the place for Sen on this map. They refined it so well. And Loud, that force smacked of desperation. Down 3-11 with only Sheriffs to work with. This one is a GG go next. That's brutal. Really brutal. And the other two maps here are going to be, even if Loud were to win them, very hotly contested. Yeah? It's not like Loud have a map themselves that they are guaranteed to dominate on. No, they've got a Sisyphus level fight ahead of them, honestly. Uphill battle. Icebox, both of these teams quite favoured on their attack side. Sunset, I would give the edge to Sentinels. Hello, my Lulu. If you do win on that second map to extend the series, it looks dire. Still, anything can happen. Team like Loud, being around the block, they might be down and out right now, but they have that experience to maybe rally themselves here. They need a few more, though. Openings not going to be given to them. Defensive setup to Sentinels just a little bit too strong, too well honed. Yeah, everything looks... They've crossed every T, dotted every I. You heard John talk about it too when he said the devil's in the details, right? What makes a team excellent is not just the macro, not just the shooting, but it's all the small things, the little interplays between players, the maximization of these are the masters team utility, dudes. knowing to always smoke this spot, or knowing to always throw this nade in this particular way. Loud के साथ क्या गलत हो रहा है पता है? Approaching ये मैप पे की गलत है. Some levels of perfection on this map in the current Split meta. ban कर देना चाहता हूँ. They are ahead of the game here. True बहुत strong है SEN का, and it's going to बहुत strong strike है. fear into the hearts of anybody else, because if you have a perma, you have to let this through. Yeah, playing split against Sen, I mean, almost guarantees. समझ रहा है chat दिख रही है. Sentinel's going to be taking it. They've only lost it a few handful of times. One of them to this team that they're playing against now, Loud, but Trying for B, it's the kind of team getting knocked by their losses. Re-clearance called here with a flash and a paranoid. Well, Good counter good flash. one, yeah, from Kawazine. Yeah, very important counter flash there. Sen are trying to set up plays like this because they have looser weaponry to work with. The two Spectres, the Bulldog. So we get to see a slightly more aggressive version of their setup. एक हाउसिंग को पूरा हिल क्यों नहीं मिला? Flow of the map. But there are still chances for Sen to win this round and just dominate with the same scoreline that they did. Flash, rifle. Bloody hell, that's a lot of damage and a retreat. Covered and watched for. Celsius just swinging wide, a bit of run and gun in the reaction. Called now from Loud. Looks like they will do so. Too much pushback. There isn't very much retake utility here for Sen. Normally their retakes are amazing, but there's really only a boombot to work with. Waiting for the right timings. I mean, the smoke up. 1 second here for Ten's. Going to be using it probably to block off one of the angles. Just jiggling for now. There it is, actually dividing up the site. Paranoia flying with the fault line. Time. Time to tick. A crucial kill. Zelsis falling on top heaven. TP forwards. Backside control, at least partitioning in it and trying to take it wide. Still with that util online. The aftershock does push him away. And time from John QT, but forcing the fights out into the open. The snake bites, plenty of util here. So Loud, really well played into that one. Just understanding how to play that
fully, just using the util. And it's officially now अभी a ऑफ closer आएगा? game than it was during the grand final. Up, Where up. SEN won 13-3. Up. But man, it doesn't feel much closer. ये थोड़ा This round casual था almost a- Senses भाई. Say a givey. Shot पे भाई It was a bonus. It was a bonus. mood You में know, भाई. Sen didn't have as much util वो available to them still. You know, Cousins Loud. पूरा mood में है वो. Round at a time, it's all the way, you got to take it. Yeah, and we've seen them pull off big Op comebacks लिया before. बे टेंस अपने goats ने लिया है. Lose leads before as well, but listen, we won't talk about that one. We won't talk about it. ये trip तो टूटने से रहा. Mentioned it a few times. Look at the timing there, just beautiful. Great read Again, that Les was going to go for an aggro look. 13-4. Presence of knowledge. Less dropped. I mean, this is your star player. This is a guy you're expecting to put up massive numbers, who's going to offset that mechanical advantage that a team like Sentinels might have with players like Second, like Tens. The desk was talking इसका about it. smoke When खत्म you shut उसका down smoke here, आ your गया. chances begin to dwindle. Trip in their face. There's no protocols at all to really deal with that one. Should have known it was there, surely. If they weren't all the way up, TP forwards, it is just being उससे वो toppled and trap तोड़ ही नहीं crumbled. सकते बिना nade All the उसके. opportunities in this round here for Loud. QCK with a nade does get the one onto Celsius. I think the spike is down in such an open position, though. It sends the close out. Goat बोलते हैं. Goat of the goaters. It's inevitable, yeah, the double face in the end. That is one of the most one-sided matches we've seen. बाप Two of our खेला top बे. teams बाप here in खेला. playoffs. बाप खेला. Sentinels are primed and ready. This is a team angry. कोई नहीं, next map. They want to go deep, they want to go forwards. They know they've had Next map. obstacles, they know it's been tough for them. Next. But that was just a Next map dismantling कौन सा है? the opening map. I don't know whether Sentinels have Next I map, thought तुम the लोग का EDG lower and thought bracket they'd का get match. revenge, but they just stomped like फोर तक चलने वाला है, समझ रहे हो? हर दिन 3-3 तो बहुत कम लोगों को मिलेगा. ठीक है ना? ओके, गुड नाइट्स. कल मिलते हैं अरे कल है क्या मैचेस? हाँ कल है ना, अभी हर 24 दिन तक है 24 पूरा. अच्छा, संडे तक फुल वॉच पार्टी. अच्छा डन 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 कल करते हैं. चलो कल करते हैं. ओके, बाय बाय. ओके बाय बाय बिंग्स भाई. कल उसके बाद 5 मैन करते हैं बिंग्स सर. उसके बाद हाँ 2 मैचेस है कल. नहीं उसके बाद इन द सेंस 24 के बाद. अच्छा वैसा ठीक है. यस डन से. या फिर जिस दिन बेस्ट ऑफ 5 मैच रहेगा उसमें हम लोग बाद में खेल सकते हैं, पहले खेल सकते हैं. बेस्ट ऑफ 5 है. नहीं एक 23rd को है ना. बेस्ट ऑफ 5 क्या है, जल्दी खत्म होता है 3-0. खराबी है रे. हाँ बाय धोनी. बाय. ये आखिरी गिव अवे होने वाली है ये मैच के बाद. ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए. 6 कौन गया टॉप रैंक सेकंड मैप? काइजन तो सर. तू कब करने वाला बेटा? काइजन मेरे 3-4 किलो ऊपर ही था. सेम टीम्स थी क्या दोनों बार? नहीं अलग अलग थी. अभी अपन टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड है कि नहीं? हाँ टॉप हो गए. और %.
मतलब how we sound once we get in the game. So as a team, we really emphasize the atmosphere. Is it too high? Is it too low? Recognizing it as a team without me needing to pause, and the whole team having the skills to call it out and know what to do to shift into the right space. And the guys have done an incredible job with that. That's awesome. And have you guys been able to take a day off? Have you touched the grass? Yes, that is another big part of it, preventing burnout. So we had a really nice day where we, I think it's called Parque de Retiro or something. It was beautiful. We got outside, walked the city. It was much needed. Glad to hear it. That's why probably Sentinels look so good. So let's see if they can carry it over to the second map. अबे हारने के बाद लाउड Great जाएगी choice of extracurricular activities there from Coach Captain. I'm back here with Mimi and High Park. They look so good. It's the park, man. I went to that park. It's lovely. They ride around on a little rowboat. There's peacocks. They in the had a park. boating day for sure. For Wow. sure. How could they not 13-4 last? How come we don't perform like this, Mike, after we go boating? Yeah, I can't answer that one, unfortunately. But I mean, to take nothing away, तो now if there was grass any भी नहीं discussion किया। ahead of this, I know Josh said on the cast as Huh? well, there is no question. Sentinel's split is seemingly flawless. Like, they do not miss a beat. And every single decision you see along the way in some of these rounds, it's not even coming down to mid-rounding. The decisions of the individuals are automatic. They're firing on all cylinders. They look so drilled. We talk a lot about this team's defense and how good their retakes are, how good their नहीं protocols भाई, are. Sunday But है। look at how they're playing their post ones as well. They're setting up forward here. Zelstis has a molly off his teammates' saying ये contact, हफ्ते and में they're उसने ping-ponging no off each sugar other करके to take that दो fight thumbs together. up This is another support round where करके once खत्म they get into post दो। run, they're going for these executes with the दो double sugar। dive दो between नहीं, Tens दो में दो and दे- Zekken, which always कोई looks incredible. And again, वो look, दो संडे नहीं Zekken पिया था has a मैंने। nade punch ready to go towards heaven. They have so many layers to these post plants, and कुछ तो really चल it रहा है seems लेकिन to life every में stage आपका of बताएं। this map. So yeah, sorry, just caught my breath for a second there. I think guys- it's not allowed yet. Yeah, just an inability to really throw them off their game. Right, there was no pressure towards the back line, the आते weaker रहते, extremity. And with the way Sen have been playing and how well drilled things are, if you let this Sentinels execute on you, you're losing time and time again. Yeah, and I want to shout out आज to मेरा the birthday है। branding रजत of भाई, EGL many on the happy other side returns too. of the days of the Sentinels, returns of John the PT, take a look at this. okay. A HyperX reflex. I felt like every round when he was By still Puff alive, खाने maybe का मन something कर रहा है। magical was going to happen. Sticks by Puff खाने का मन कर रहा है। Sticks by Puff? Puff। घर पे खाना बनाया वो खा ले। वो तो रात को खाने वाला हूँ वो। डिनर में कौन खाता है? वो सिर्फ प्रोटीन है, वो खाने वाला हूँ मैं। हाँ तो खा ले अभी। पेट Sticks, भर जाएगा। आज तू डिसाइड कर कि मैं क्या खाऊंगा। प्लीज उसको बोल घर का खाना खाए, रात को मंगाएगा। घर पे जो बना है वो खाना? हाँ। वो तो रात को खाने वाला हूँ। नहीं, अभी खा तू। वो पेट भरने जैसा भाई नहीं देख है मेरे वो। घर पे वो कुछ पेट बनता है भर इसलिए मैं मंगाता हूँ। क्या क्या? मेरे घर पे कुछ बनता नहीं इसलिए मैं मंगाता कोई हूँ नहीं, खाना। स्ट्रिक्स तू भी इधर आ जा। सेम। क्या सेम? शर्म, तेरे घर पे तो कुक है भाई। शर्म। 2 ही बार आती है यार, 3 बार भूख लगता है। Here now with. Welcome back, Mika Fabs here now with STK Welcome, of yeah. Loud. And now that was a very tough first map. What was the team struggling with? देव भाई ना मान रे, देव भाई। We entered in a game with a game Six, plan. देव भाई ना This मान game रे। plan didn't work. Unfortunately, they adapted themselves. Thanks so for they the have a 10 bit, मेरी like, जान a lot के of टोटे। merit on that. दीदी So Big nice Sir spot to have as a like streamer is the we are best. more How is comfortable he on the ऐसा map. husband Like out of we have 10? like more Big plays on this map. तुम चुप रहो। इंटरव्यू हम कल देख लेंगे किसी और One एक के हस्बैंड है। 0. 10 I'm a 10। हाँ, 0.
नहीं बोल दिया अभी नहीं बोल दिया सॉरी नहीं वाइट Retakes. They're very good at kind of timing how Okay. they're using their mollies to delay 10 हो their गया? opponent's plant, हो गया. then going for these flood Rizzy retakes. bhai, with thank you for the Viper 5 are gifted really मेरी चार effective. गifted. This is a Chat map where जिसको I भी think you gifted get to मिला है see the उसको experience, the OP fundamentals करके पकड़े of Loud उसको. on full जिसको display. भी They've gifted played मिला. this comp for a while. They have a lot of variations of how they Yo, want to kiddies, set with up with smile, it, kiddies, especially smile. on this Love defensive you, side. bye. This is the comfort zone for the Chat, we Brazilians. are close to 14k likes. जिसने like नहीं किया है तो Call me a जल्दी coward, like whatever. करो. Obviously, this being the anomaly of the grand finals for me is a very, very close fought affair, a 13-11 scoreline regionally, but I don't फिर feel chat like में we're तेरे को getting- गाली दे रहे लोग. बार क्या है ये आने वाला है भाई कॉपी ये मैंने क्या क्या है आने वाला है 10 2 इंग्लिश में क्या आने वाला है जी ओके लगा था क्यू की जगह ये देने वाला है सुवर घीको को कॉम्बो करने वाला समझ गया टॉक्सिक चैट है भाई Yeah, we were talking about this before. We were talking about, yeah, it's going to be a long, drawn-out affair here. I think with that start, it's just so hard. baklava ये क्या है? Time and time again, we say they're never out of भाई the series. baklava They're अच्छी never out sweet of है a पता map. है बहुत अच्छी पसंद है sweet है यार Again वो today, भाई हो it's जाए another concerning look at. कुनाफा भी You know, खाया तो you'll नहीं see, I mean, even there with the कुनाफा भी interview खाया there कुनाफा भी talking about खाया the adaptations that Sen made. वो भी I feel अच्छा like वो they भी made an अच्छा awful lot. Loud had no approach to really disrupt Sentinel's gameplay that they've ए demonstrated आना time and time कभी again. कभी आएगा साथ में WatchParty करते हैं आज से So good, but you guys are home voted, and you think that this is going to go the distance, and I have faith in the Saturday को आ Mastercard जा. fan poll. But the question is, Bren and Saisho, do you guys have faith in Loud? कोई और दे देगा. I mean, I'm praying. I'm on my knees here praying. So I'm not gonna lie. I want a close game. I want something that's not gonna be so lopsided between these two कोई teams. We can और certainly तेरे hope को so. You know, डेजर्ट the ला last के time देगा these two बोल रहा हूँ teams पूरा tackled सुने. each other on Icebox. It was Loud who got the better of them. Both बंदा of these एक teams have serious very, question very good है fundamentally. Attack मतलब sides with as their long comps, as they are it very well doesn't drilled hurt in that anyone and regard. it is But I want to related to see me. some fight back now from Loud. I actually think that Sen's composition is extraordinarily good against Louds too. It's just that Sen haven't worked on this map as much as some of the others in their मेरे को pool. भूख नहीं लगी And है. if they've used this time accurately, then My maybe cravings have been they can come out with another incredible रेस ने map सीधा win. मार दिया अभी तो चालू हुई थी. That's not going to help. Sassy going down there at the गिव start अवे of the round. ये इसके बाद अभी 2-0 रहेगा उसके बाद A करेंगे. really important piece of the puzzle in terms of getting the Very, plans very down. nice, Less that early face, that early peak. भाई ये मैप में हर पर बहुत अच्छा Expect है. this to be a क्या re-hit. मिलेगा प्रीमियर में? And they won't really know otherwise until the alarm bot takes contact. And at that point, it's kind क्या of बोल रहा है? too late. सुना नहीं Sadak doesn't ये have मैप में हर पर Nanosh बहुत to अच्छा है. deny. हार्बर वाइपर. भाई प्रीमियर में भी हर बार खेल रही थी वो टीम. इतना अच्छा एजेंट है. Flash through, who's playing anti? Where's the follow-up? There is none. Just rips away two of them. Frenzy in his hands. A backside position being played here. Dash fading away, but second still standing his ground that he's earned himself. मैं मान नहीं रहा. Dart dodged. Another play being set up as well. Attends with a pop flash into the peak. It allows Zekken to recross back, playing together now, but they've got 4 players to deal with. Make it 3. Can't let this one slip now, Loud. Shot Dart. It's good for the damage. Ten's going to be forced out wide. Tens. Tens! You can't be getting away with this, son. Surely not needs. Doesn't even matter. Push forward. That's a 2v5. That's ridiculous. The push into Sadak there to give Sadak 2 kills कौन was सा about the only way that Sen could 2v5? have messed up what was happening. Not that it's their fault. They didn't know where exactly he was positioned. अलग है भाई. But for Tens to recover that, he's forced to take that duel there as he crosses back to the sidelines. Yeah, he's forced to take fights because of Goat, the man. team, because of how they're positioned. Goat big, goat. Who are they picking? Who are they picking? Goat, they're Give it picking to the him, goat. man. Oh my टेंस god. का बेस कितना मस्त है. The players on Loud are so talented, and Tens is just owning them. You man, return to form. His form has been spectacular अन्ना in गया और basically all of this year. हाँ? अन्ना गया और उसने The अन्ना actual का shots Baat that Tens has been hitting, the moments, the multi-kills from him have been unbelievable sometimes. वो लगा रोटेशन टाइम When पे he's था not लेकिन क्या कुछ forced कर to be सकते the हैं? entry player, to have all of that extra mental bandwidth being taxed, the rifle has just been superb.
Players going to be dropping plan online here for Sassy. Now look at this high tide. It's not going to have an influence in this round, but I do like how Loud are using it. They throw it out from 2Es when he's playing over towards Snowman, and it's going to let them play between the Viper wall and the high tide to break the wingman, to deny the plant, to fight more aggressively. I think that could be crucial once we get onto some of the Viper rounds, but there is no danger here. Sen have just taken a very clean B exec. Yeah. You need time together to Aisa. He should be trying to hunt. Yeah, you see him swap the weapon. Yeah. Offloading it. हम दोनों को बाहर जाने का बहुत मन होता है. Hunting. 2 years. Top of the bridge brings him down. Still Chris, one step closer. Yeah, matters. It's a fairly important denial though. If Tens had access to that ult at the start of the round, things would get quite difficult for Loud. ये लोग bonus round भी जीत सकते हैं. मेरे पास guns अच्छे हैं. 3 bulldogs एक गाड़ी. Very potent, and the thing is, Loud's composition doesn't actually have great ways of disrupting you when you go for that. It doesn't have the ability to, you know, flash repeat from yellow or pipes on A, that kind of thing, which teams like Gen.G have done so much work integrating those micro plays on the defense. Yeah, and I think that's one of the reasons why we saw the attack side be so good for both of these teams, is that SEN hadn't really built out those defensive plays, and Loud's comp it kind of relies on playing retake, which is easier to deny. Pro की logical light. The purpose of that is just the spotter for players. Company gifting V3 Pro में use कर रहा है. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. Don't know if that's even been noted. I mean, मतलब लोग तो बोलते रहते हैं super light. All grouped up. लेकिन V3 Pro में not बहुत really an opportunity here for Tens to be able to get the ult online, I don't personally, think. Instead, looking more like a standard A exec. Now, Tens is getting in position for this flash dizzy combo that Gen.G were using. It's so good. Yeah. Choose to break it, you're going to be staying right into the sun. I think it's off plan. Beautiful round. Now here for Sassy, Util a little bit delayed, so he gets down, close to the quarters. Down underneath rafters, Kawazin wins his one out versus second. Still, gets to the position for it, and Tens is starting to use his ult now for this. Making sure that they can't use any of that post-plant Util. Bhai, dono stack kyun kiya hai log ne? Kawazin's head clean off. Over the top of the ropes, this is a real dangerous situation. Molly bhi hai, dono ka molly hai. नहीं स्टैक किया उन लोग ने यार एक मॉली CK finally abilities back online dash backing away gets the one needs to clear the corner here but he's just really struggling waiting out wide here having a defuse from Sadak pushed back and away and a wide tip tap and a face there from the Loud players remaining just in time. molly stack नहीं होता तो जीत जाते बहुत Very time nice था patience there from Loud. Didn't get caught by the flash nuclear, but I can see that Sen are starting to add more stuff into their playbook. का भी molly था. I mean, that flash dizzy combo is so good. The pattern that the dizzy takes and the way that the flash pops catches so much of the area. And Loud had to wait a long time to get that high tide and the cove back online. Chris, thank you for the 20. Really well to stop some of this momentum from Sen. Calm the mollies. Ole. सुना ना क्या बोला? There we go. Zekken looking for a readjustment early. Count the mollies. These players are smart. They understand what the issues are. Can't talk about it so much. Potential off the charts here, but clear understanding of what is really W, going on. second W, bro. Second W. Knife not broken. Instant एक problem देखा, instant That's fix. going to create a serious threat though. See how 2Es is using his high tide to make it difficult for Sen to clear out that area, unless he's pushing up on the other. Calm the mollies पे. Count बोला उसने. Count the mollies. Count. Count the mollies. Flash dizzy. Dash forward from Zekken. Make sure to clear all that space. If somebody was holding out aggressively. Calm the mollies जो भी है. Related मतलब molly stack मत करो. Basically रे बाबा. Maybe to call. Maybe to go back into Zelsis. ये गलत वाला है वो. Yeah. I mean, they वो either थोड़ा need to ज़्यादा quickly there or go back over towards A, because if they wait enough time for 2E's high tide to come back, which it now is, it's much more difficult to get the plan down and get Sassy his ult. Drone is going to confirm. I think that a lot of these players have left the area. Does it catch? Oh, yeah, just. Onto Zekken. Zekken looking like the fox in the pen, but with him notified now, he's really just caught. He is, but he's going to be distracting and pulling people away for quite a while. Three on him. Here we go. Coming through there. Dizzy firing a blind shot off, but it actually didn't trigger onto Les. Nano swarm. That's so much damage. My god, yeah. Ten's lucky to be alive. Facing damage पड़ा. अरे अकेला जाके मर गया वो. Taken out cleanly. Now Ten's going to be playing a 4 position here because he is so low. Might be able to get a 1 and done. And Sassy with that ult plant
मेरे हिसाब से सिर्फ आगे नहीं लेके जाएगा, सिर्फ आवाज करेगा, सिर्फ आवाज करेगा शायद। कौन तोड़ने चाहिए Sassy, lets it loose, the movement clean, jiggling with it. Entertainment not quite online here. Now a bit of pace injected back into the thing. See it loud, using that util. All available for them, but it's a crossfire setup of Sentinels and they punish that swing. And wide face out, bring the movement and patience with the aim. Cooling down the weaponry enough to take out QCK. Over the top of the ropes, Elsa is hungry for this kill. He's hungry for it. Building up towards it, but okay, Les just a better player on the day. 4-1 Strix, 4-1. Sad situation जीत for गया him. बस crispy लग He was रही the player है, pushed the crispy. furthest forward. अगर जॉन क्यूटी पे चेक करता ना पूरा मार उसको मार देता, लेकिन उसके बाद भी तो layers है उसका क्या? ये problem था. Or Zekken specifically was saying calm the mollies. And the reason that's so important in this composition is because calm the mollies बोलो उसने, comms करो जब mollies कर रहे हो, calm the mollies. हाँ बराबर. Players need to be able to hide and not have to face and break cove and fight. मेरा loud 2-0. They need to force Loud to आप bring the पहला fight to वो वाला them हार if चुके the हो. Already spike last में is पा रहे हो, safe. अपन वापस 2-0 पे आ गए, ये हार हो गया, अभी 3-0 होने वाला है. Just saying. Against what Loud have. Wicked money here, QCK, 3K in the bank, looks like he's trying to save the operator, but for now the sheriff will have to do it. Short बे, short. तुम्हें तो आगे कैसे वैसे? लेकिन बहुत ज़्यादा space दिया बे. Refresh कर एक बार. Yellow, but really they've got nothing to try and cross and take control of B main here, just putting that emphasis. Here towards the अभी मेरा 1-18 चल रहा है. मेरा भी. 113. 12, 11, whether they rotate, 10, whether they re-hit, 9. and you can see Loud here, just trying to figure out, is it correct to stack onto B? QCK I am from the future, you. They think it's a re-hit. They're keeping players on this site. Might be some serious danger here. I mean, 2 years यार just holding on to पता नहीं रे, ऐसा हरा में कैसा हुआ मैं? IDH नहीं है मेरे को. There, flash through into the back. Dart, oh my. Bam पड़ेगी. Oh! From Sukawasi didn't really stand a chance up with the armor. Draft dashing away. बोलते ही बे, देखा क्या? QCK. Oh my goodness. Has anyone heard that? Tens is watching, but they're going to get distracted. They are distracted now. The pressure really being applied is less. Yeah, And QCK for the cleanup. John QT is there with a trade, but 1 versus 3 now. Diffuse online for 2 years. Not going to be pushed away from this one. There's no more utility left available for them. So a thrifty round for Loud. So we want to see. Yeah, that is It all started with QCK one tap. What we saw on Split was the economy just getting ruined for Loud over and over. They could never build up a bank to work with. They're going to call a timeout after winning this round as well. Yeah, it's bizarre. Maybe the timeout probably queued a little bit earlier. Yeah, probably queued before they won the round. But QCK opened this up with a beautiful sheriff shot and then closed the entire thing too. The Cloudburst make sure that nobody caught him getting past the alarm bot. And often that kind of thing is going to get heard. हाँ Strix, क्या क्यों ले रहेगा? Gets away with मतलब जीत के टाइम आउट वो लोग को कुछ दिखा क्या ऐसा? Tiny things, the tiny differences that Loud ने लिया टाइम आउट. हाँ. Watch for. Yeah. And also QCK being able to give them the उससे confidence to गलत stay हुआ है जो on नहीं mid होना by चाहिए taking था. that ऐसा कुछ mid-round तो हुआ है time. लग रहा है. And taking the risk to re-explore through mid. And it is a risk. You know, he's only one man in that kind of situation. कौन सा वाला? अपना वाला? So now what allowed looking to readjust? Can they take any lessons from winning that I'm round? totally introvert. One of them would Same be, yaar. Help me trying to fight how before to Sen approach a have girl. I'm utility 29, setups. never QCK dated was anyone. able to manage that. मतलब He's पसंद ही looked नहीं fairly कोई. good in the games of Icebox. But अभी आई है. Simple है, simple है. Doubting his jet ability. And the other big takeaway I think from that is trying to look for mid-round information so your stacks are correct. बस लंबा silence के साथ समझ जाएगी. Maybe might see some sensational. ये भी tweet कर सकते हैं. ये भी tweet कर सकते हैं. Said just trying to gather, gain some of that mid-round information, but comp isn't really too suited for it. I mean, you've only got the Sova as your initiator. कितना resolution पर रहेगा? Resolution max नहीं रहता. Stretch पे खेला वाला. And again, you don't really have the ability to flash re-clear spots on defense, so it can be very एक चीज देख के अच्छा लग रहा है. Tens बंदा consistently पूरा VCT अच्छा खेला. That's got its own danger. मतलब ऐसा देख के ऐसा मतलब यूटिलिटी से opposite sides of the map here to start this next round. अच्छा. 4 players grouped up on defense on A, just pushing QCK into an aggressive angle. इतना pressure होने के बाद भाई. Yeah, but I mean, Sen are nowhere near. Still, he's going to be telling his team to over-rotate. Get your asses into mid, get your asses into gear, because it's leaning
over towards a B hit. Yeah, and Loud have actually finessed this. Lovely. I mean, they've managed to get into a position where Sen weren't comfortable going for the early round timing, and now Loud have stacked up the mid-round timing. भाई लेकिन किलजॉय On मर top of सकता है. that, QCK's watching in case things rotate back towards A. और उनको पता है बीस्ट आ गया. देखो थोड़ा करके पुश कर रहा है. Oh, maybe just catching tail end of somebody. I think they've got all the info they need though. Yeah, they have. With QCK pushed up deep like this. Blind boom होने वाला है. Stack already, protocols in play. Molly forward, Zekin just tanks it. Half his HP just removed, but they weren't expecting it. Still, Loud. Yeah. More kills. 2 versus 3. Sassy almost being taken out. Has to back his way to safety here. Fast flank of QCK. ज़्यादा deep घुस रहे हैं Causes some issues a little bit later into हाँ things. बे सीधा dash मार के. Will be notifying his presence at least with किसी ने सुना कैसे नहीं removal वो of that dash? turret attack from Sadak. He's hoping that forces them out wide. Don't know if they could have took a glimpse of that one. Still अरे 10 ये HP, मारा वो just मरा. 2 Zelsis. Kova. There's no real chances here. There's no real chances. Maybe. अच्छा खेल रहा है. Loud अच्छा खेल रहा है. Loud अच्छा खेल रहा है. Full stick there from Sadak. I think Loud's defense on Loud B looks no. way better than their defense on A, personally. Especially coming out of the Loud Gen.G game, that was my big takeaway. I think Loud's protocols for dealing with B hits like this are actually real nice. Yeah, they missed second, but they keep good snowman control, they fight from kitchen, they have good crossfires on people. Look at how Sadak, playing around orange, is able to pick up second. I think Sen should be quite cautious if they're sending B hits over and over and over. ये भी एक option है. The A side of the map does look But more voice of a third weakness सबसे for best Loud. They है. tend to play it for retake more often. The और flash उसके dizzy बाद बहुत नींद आ रहा है. सोया नहीं मैंने. ये करूँ. चलो guys, जो भी ज्वाइन किया स्ट्रीम बहुत धन्यवाद. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, this a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta